The new look Sindh side is off to a flying start in the Kingdom Valley National T20, winning the 2 games out of 2, courtesy some all-round performances from Saud Shakil and his men. Balochistan couldn't capitalize on their first win. Bowlers leaked runs and lower order failed to chase a modest total. Bowl them! That's not the start they want. A lot depends on the informed Shan Masood and the skipper Yasir Shah. Can Sindh continue their winning streak, or will Balochistan come out all guns blazing? We are all in readiness for yet another exciting day of cricket. Welcome to another sporting day at the National T20. The teams arrive here at the Pindi Cricket Stadium. It's neighbouring cities today, or you can say the two sides who know a lot about each other in contest in match 7, Sindh versus Balochistan. So, all important. The games, I totally feel every game is important, whether it's the start of the tournament or the business end. Let's see if the experience of Yasir Shah wins, or is it going to be Saud Shakil and his men. All right, good morning to you. If you really like the sun, this is the place to be. But I'll tell you one thing on a positive note, that as the days are passing by and we are crawling our way into the winters, it's not here yet though, it's getting a little easier. Otherwise, sometimes the sun is very, very sharp. Before we get into match 7, let's have a little bit of a recap of what happened last night. And it was a very, very good encounter. KP once again winning this one and going through 21 runs margin against their opposition, and they did very, very well. This is the situation at the moment after 6 games. Sindh is leading 2 out of 2. Because of their net run rate, they're right on top. Khyber Pakhtunkhwa with their 2 wins are at number 2, and you can see the rest of them. So the bottom 2 will have to work hard and get their act together. And for Balochistan, it's a golden opportunity to cash out on this day game against Sindh. I've got my guest alongside with me, and very, very good morning to you. Good morning, Sikandar, and good morning to all. When you look at the matches that have gone by, I was talking to Khalid Usman in the post-match, telling him that is it really necessary to start thinking that there's a trend, you bat first and you win the match? I don't think that's the case. 2 games have been won by a margin of 2 runs. Then there are other margins like 8, 18, 21. But it's all probably for the sides who have been chasing for themselves to blame. They've been in good position and then they've let the game go or slip out of their hands. What happened yesterday? Well, just recap that a bit and I'll just get your opinion on it. We know that KP fights right till the end, but where do you think that the opposition just lost it when we talk about Northern? It was quite a close game. It could have gone either way in the end. But once again, that fighting spirit from KP comes to the fore. They just never give up. And at one stage, Northern had the partnership going and they were looking to just nail the game. But then KP comes back with the breakthroughs. There are some certain experienced players. There are no big names, no superstars in that team. But what they do is that they fight for each other. And their togetherness always comes to the fore. Young and old, that's what the combination is. Khalid Usman is a very underrated cricketer. As a leader as well, batter or bowler, he always comes and performs under tough conditions. But what's most impressive is his captaincy, because the way he leads the side with a calm demeanor, and he doesn't feel shy to go and ask his senior men for some advice if he needs to, but he makes his own decisions, and that's really key for KP. And also the case that this side, compared to the other sides, have a gelled unit. Well, why I say gelled unit? Because these guys have been playing a lot of cricket together for the longest time. KP is one of the teams that don't chop and change a lot season by season. Whereas other teams, we see a lot of changes coming in where players get swapped. So Khalid Usman has been leading for a while, and people like Imran Khan Senior or Sahibzada Farhan, they all have been playing a lot of cricket together as KP, whether it's the 50-over version or is the longest format. Anyhow, so this is what happened, and KP won that game by 21 runs, and they look good. Now let's have a focus on today's game, which is match 7, Sindh versus Balochistan. Balochistan is a good side. This year they are very strong on paper, and they've been given some flashes of brilliance in the games that they played. Whereas Sindh, they've been unbeaten, but they do have certain weak links. Good point about them is that they've defended a low total,
and then at the same time they've had a good total on the board and they've managed to get up those points. So if you look at Balochistan, it's a very recent performance where Yasir Shah led them. They lost their way somewhere. I mean, they had the grip on the game, and once again, I don't know why sides are unable to chase out here. Well, it's not due to conditions, because talking about that Balochistan game, they were chasing a modest total, and they were cruising at one stage. Asad Shafiq and Hasibullah gave them a perfect start. They were 50 for none in the power play. But then that middle order, the big hitting middle order collapsed. The likes of Haris Sohail, Hussain Talat, they didn't contribute much. And they will be very disappointed, because for most part of that game, they were dominant and they were the favorites. After having won the first game, 2 out of 3 would have made them sit at the top with Sindh. So they'd be disappointed. But the good thing is they got the second opportunity very quickly. A quick turnaround from them, so they can put the things right that they did wrong yesterday, and it makes for an intriguing contract. When you talk about Balochistan, there's one player I personally like a lot. I've been watching his cricket, and he's a natural. You talk about his batting, you talk about his bowling. He's an integral part in any captain's dream, down the order with the bat, and he's flexible enough to bowl the new one or otherwise as well. Ahmad Butt is a name. I've seen him, I say, 3 seasons ago in Faisalabad. He was absolutely unstoppable. He has been going on, pushing himself. He pushes his case again. He hasn't really had the opportunity to, well, you can say, impress the selectors for the international call. But he certainly has it in him. I'm talking about the shortest format. Absolutely. And to be honest, if I'm thinking his career has somewhat stalled, because a lot was expected of him. And if you look at the resources that the national team, the Pakistan team require, a fast bowling all-rounder is definitely something that the Pakistan team is missing in the middle. So in the last 10 games, he's been striking pretty well, and he's been the leading wicket taker as well in terms of the all-rounder. But like you said, 3 years ago, one felt like he was just about ready to go to that next level. But for some odd reason, it hasn't happened. What's the reason? Because he plays late in the middle order when it comes to batting. Obviously, the opportunities are very few, and he only gets a few deliveries to impress. But if he wants to nail that spot in the national team, whatever little opportunities he gets with the bat, he has to make use of that. In terms of bowling as well, once again, what's his role? He does swing the ball, the new ball, and he has variations with the old ball. But once again, there's that little something missing that's stopping him from going to the next level. I'll tell you what that is from the seat up there. It's important for all the players, from what you see, watching game by game. And I suppose the selectors also see that. Selectors see that what talent you possess. But match-winning knocks, that's important. If you play a quick-fire 20, 25, but in a losing cause, no, you got to finish the game. And that's what probably we've been waiting with Ahmad to do that for Balochistan. Let's have a look at the pitch. And Ali Yunus is out there earlier, and he'll tell us more about what this strip looks like. Sun is shining here at Rawalpindi Cricket Stadium, but the good part is that there is nice cool breeze going on in the morning that will make life much easier for the cricketers. If you look at the numbers, the temperature is 31 and the humidity is 62%. And if I talk about the dimensions of this ground, I'm standing here at the pavilion end, and on my right is 72%, straight is also 72%, on my left also 72%. These are not small boundaries. You need real power to cross over these boundaries. Now coming onto the surface, it looks like a belter again. The pitches have been excellent here at Rawalpindi Cricket Stadium. The groundsman definitely deserves applaud for making such beautiful services, full of runs, and good bowlers definitely are getting purchase out of it. This is no different. I am seeing full runs on this pitch, and good bowlers will definitely take wickets too. So overall, it's a very good pitch. I'm expecting another cracker of a game. Big boundary is square, and 72 meters is not small. And when we talk about spinners, that's when they have a say. When the ball gets stuck in the surface, it's very hard to clear that boundary. And that's what's been happening, especially when you're chasing out there. You feel that you can hit everything out of the park. Let's have a look at what happened at the toss a while ago. Marina was out there with the two captains, and let's find out what they wanted to do.
It's a lovely morning here and we're all set for the match for Kingdom Valley National T20 game. I've got the two captains with me, Saud Shakil and Yasir Shah, and Nadeem Arshad, who will be officiating the match. Yasir, please go for the flip. Tails. Tails is the call. Tails is the call. It is tails. And tails it is. Oh. Bowling. Batting कर रहे हैं. Batting कर रहे हैं. क्या करेंगे सऊद? हम लोग पहले बैटिंग करेंगे. सरफेस के बारे में बताएं, क्या परसीव कर रहे हैं? वैसे ही लग रहा है थोड़ा, और ये कि कोशिश करेंगे इसको थोड़ा असेस कर लें. अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट जब भी मैच होता है तो आप थोड़ा सा 2-3 आवर लेते हो पिच को असेस करने में, तो उसको असेस करके फिर ही टारगेट सेट करने की कोशिश करेंगे. माशाल्लाह अभी तक सिंध के लिए कह सकते हैं कि कोई चीज़ गलत नहीं जा रही, लेकिन एज अ कैप्टन कोई एरियाज़ हैं जो बेहतर करना चाहेंगे? ऑब्वियसली कोई भी मैच खेलते हैं तो उसमें कोई ना कोई एरियाज़ होते हैं जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं. मैं चाहता हूँ कि अगर हम लेट थोड़ा सा एंड के टाइम पे हमारी हिट्स वैसे नहीं लगी हैं, वो अगर इम्प्रूव हो तो अच्छा रहेगा. और कुछ चेंजेस टीम में? एक चेंज है, उमर बिन यूसुफ आज रेस्ट कर रहे हैं, अब्रार टीम में है. चलें, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बैटिंग कर रहे हैं. ऐसे थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो लग रहा है कि बैटिंग फर्स्ट जीत रही है, वो चीज़ कोई माइंड में है आपके? ये कि हाँ, जो भी मैच यहाँ पे हुए हैं, जो जिसने पहले बैटिंग की है वो जीत रहे हैं, तो कोशिश करेंगे आज हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह ये चीज़. थोड़ा सा आपकी डेथ बॉलिंग में इश्यूज आ रहे हैं, क्या चीज़ें एड्रेस करना चाहेंगे? ये कि अभी थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस है थोड़ा सा, और जगह पे बॉल नहीं हुए, क्योंकि आपका डेथ ओवर्स, आपको जो बॉलर्स होते हैं वो अच्छी जगह पे बॉल करेंगे तो आपकी डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग होगी. तो थोड़े से हमने थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग नहीं की आखिरी 4-5 ओवर में, जिसकी वजह से रन ज़्यादा हुए. और बैटिंग में भी ऑब्वियसली डेप्थ बहुत है, लेकिन उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाए. हाँ, अगर देखा जाए तो हमारे 6 ओवर में 50 रन थे और हमारा कोई आउट नहीं था. उसके बाद 157 रन इतने ज़्यादा नहीं थे, मतलब वो अचेजेबल रन थे, लेकिन हमारे बैट्समैन उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सके, और क्योंकि पार्टनरशिप नहीं लगी, लंबी पार्टनरशिप नहीं लगी आपस में, इसी वजह से कोई चेंज नहीं हुआ. कोई चेंजेस आपकी साइड में? एक चेंज है, आकिफ की जगह जुनैद खान खेल रहा है. ऑल द बेस्ट. थैंक Thank यू you. वेरी मच. The news from the center is that Sindh has won the toss and they have decided to bat first. Well, I'm a fan of winning the toss and batting first, put the runs on board, in this format at least. Let's have a look now. We've heard both the captains, they've strengthened their bowling. Akif was struggling, 53 in his 4 overs in the last game, so that was around the corner. That change was coming. Good thing to see Junaid Khan in action. He's got the experience, of course. But I'm surprised about leaving one batsman out, and that's Umair bin Yusuf, and getting a good bowler and more spinner, and that's Abrar Ahmed. Yes, strengthening the spin department, Sindh has taken that route. Probably they think that their top order is in good enough form to last the distance, and then they give some chance to the all-rounders later in the innings, because that's what Saud said. They were struggling with finishing big towards the end. So it means that they're satisfied with the top order, and they've took the opportunity to bring in Abrar, who brings some mystery with him. We've seen him before, and the conditions the way they were, it may feel like he can get into the game as well. So it's a good change. And talking about Junaid Khan, he's just come back from England after playing some club cricket over there. So it's good to see him back in action. And that change, like you said, was on the card because Akif struggled in the second game. All right. Well, I'd say that, you know, the inclusion of Abrar Ahmed is a very fresh change. I like that. The boy is eager to go out there and perform. He gets the ball to turn both ways, and he does cause problems for the batters. So it'll be interesting to see how he performs. Also, Junaid Khan, it's been a while since I've seen him in action, so that'll be a good sign as well. But yes, Sindh is playing some good cricket. Saud Shakil is having Sarfaraz's help. You can see some brand of cricket coming in that way. But as long as you're getting those points, as long as you are on that points table right on top, it's all good. They can afford to make those changes. Your final prediction, what do you feel now? We know Sindh has won the toss. They're batting first. Without going with the trend, you feel Balochistan has an opportunity, they can, you know, challenge them today and win this? I think looking at the wicket, it's got a little bit more moisture than yesterday, so it means that it may last the whole 40 overs. So wicket may not play a key part here. Execution will be important. So batting first doesn't really matter. Whichever team plays the best cricket over the course of 40 overs, they will come out victors. Sounds good. Thank you so much, Faisal, and thank Pleasure. you guys for joining us. We'll take a short break. We come back with action in match 7.
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज चौथा दिन है किंगडम वैली नेशनल T20 कप का और मुकाबला हो रहा है बलूचिस्तान और सिंध की बड़ी ताकतवर टीमों के माबैन। दोनों टीमों में कई नामवर सितारे आज चमकते हुए नजर आएंगे और ये बड़ी चमकदार पिच है जिस पर बहुत से रन्स बनने की उम्मीद की जा सकती है। मौसम इंतहाई खुशगवार है जिसकी वजह से उम्मीद ये है कि गेंद बेहतर बल्ले पर आएगी। हार्ड पिच है ये रावलपिंडी की, कहीं कहीं दरारें आपको नज़र आ रही हैं लेकिन इनके बारे में इम्कान यही रहता है कि ये खुल नहीं सकेंगी। बैट्समैन अलबत्ता ज़रूर खुलकर खेलेंगे। सिंध ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले बैटिंग करने का ऐलान किया। शर्जील खान खेलने के लिए जा रहे हैं साइम अयूब के साथ और ये दो अंपायर इम्तियाज़ इकबाल और मोहम्मद आसिफ जिन्होंने बहुत सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है 90 की दहाई में। आज दोनों ही टीमों में एक एक तब्दीली लाई गई है। अबरार अहमद का इजाफा किया है सिंध ने अपनी बॉलिंग की सफ में और दूसरी जानिब बलूचिस्तान में जुनेद खान की वापसी हुई है। तकरीबन 10 माह के बाद वो कोई पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा मैच खेलते हुए नज़र आएंगे। सिंध ने अपने दोनों मैचेस जीते बड़े अंदाज और नाज के साथ, जबकि दूसरी जानिब बलूचिस्तान ने पहले मैच में 2 पॉइंट्स हासिल किए। कल उन्हें हैरानकुन तौर पर सदर्न पंजाब के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा जिसका मुदावा करने के लिए यासिर और उनके साथी आज खासे बेताब होंगे और यासिर शाह से जल्दी यही तवक्को की जा सकती है कि वो शर्जील खान पर अटैक करेंगे। 3000 से ज़्यादा रन शर्जील ने बनाए हुए हैं। बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान इससे पहले जो है 5 मरतबा मुकाबला हो चुका है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। 2 मैचेस बलूचिस्तान ने जीते हैं, 3 बार कामयाबी ने सिंध के कदम चूमे। जुनेद खान से नई गेंद कराई जा रही है लेकिन शायद इनको वापस लाने का जो सबसे बड़ा मकसद हो सकता है कि जो डेथ बॉलिंग है बलूचिस्तान की वो ज़्यादा मजबूत हो जाए, क्योंकि डेथ बॉलिंग के शोबे में इतनी कामयाबी मिली नहीं। दोनों ही मैचेस में बहुत से रन्स दे दिए गए थे। कमेंट्री बॉक्स में मरीना इकबाल आ गई हैं, पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर। खुश आमदीद मरीना। खुश आमदीद तारिक भाई और खुश आमदीद सबको जो इस मैच को यहाँ हमारे साथ देखने के लिए बैठे हैं। अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। सिंध और बलूचिस्तान तगड़ी टीमें हैं दोनों। सिंध का ज़ाहिर अल्लाह भाड़ी, क्योंकि उन्होंने अभी तक दोनों ही गेम्स जीती हैं अपनी और बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीती हैं। मोहम्मद आसिफ फायरिंग की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। मोहम्मद आसिफ जो है मीडिया सेंटर एंड पर अंपायरिंग करेंगे। उनके साथ इम्तियाज़ इकबाल होंगे, वो स्क्वायर लेग पर हैं। तो पहली गेंद आने को है इस मुकाबले की। जुनेद खान बनाम शर्जील, थर्ड मैन पर इसे सरकार कर पहला रन हासिल किया। सिंध की टीम की बैटिंग जो है अब लग रहा है उसमें एक रवानी आ चुकी है, एक रिदम है और पहले दिन या सीज़न की इब्तिदा में जो शुबा हो सकता था वो दूर हो गया। इससे आज एक बैट्समैन को कम किया सिंध ने और उमर बिन यूसुफ की जगह पर उन्होंने अबरार अहमद को मिस्ट्री स्पिनर को आजमाने का फैसला किया। इम्तियाज़ इकबाल ने कराची में बहुत क्रिकेट खेली हुई है, मलीर जिमखाना में, जहाँ से बड़े बड़े क्रिकेटर्स उभर कर सामने आए। साइम अयूब की जितनी बात की जाए कम है। 92 ये थे इन्होंने पिछले मैच में और पूरे एतमाद बैटिंग की थी, लेकिन आज इनका सामना जुनेद खान से जो काफ़ी तजर्बेकार बॉलर हैं और अच्छी पेस से गेंद कराते हैं। ऑफ द मार्क ज़रूर हो गए और जैसे टॉस पे बात हो रही थी यासिर शाह भी यही कह रहे थे कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस बॉलर्स हैं हमारे, इस वजह से डेथ में इश्यूज़ आ रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जुनेद खान को यकीनी तौर पे इसलिए लाया गया है कि इस तरह की पिचेस पे जहाँ गेंद अच्छा आता है वहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझ के बॉलिंग करनी पड़ती है।
पुल करने के लिए गए, लेकिन गेंद तवक्को से ज़्यादा तेज़ आई, उछल कर गई विकेट कीपर हसीबुल्ला के पास। जुनेद खान बाएं हाथ के बैट्समैन को नई गेंद करना पसंद करते हैं। स्विंग बॉलर हैं जुनेद खान, इंग्लैंड से आए क्रिकेट खेलकर। इंडियन यॉर्कशायर काउंटी के यहाँ जो लीग क्रिकेट खेली जाती है, जुनेद खान उससे वाबस्ता हैं पिछले कुछ बरसों से, और अपना ज़्यादा वक्त मौसम गर्मा में ब्रेडफोर्ड में गुजारते हैं। यहाँ पे एक अच्छा इम्तिहान हो सकता है शर्जील का, क्योंकि हमने देखा है कि जो वेस्ट लाइन से थोड़ी सी ऊपर होती है उसको ये बहुत ही कमाल तरीके से पुल करते हैं, लेकिन अच्छी पेस के साथ जो बॉल राइज कर रहा हो उनकी शोल्डर हाइट पे आ जाए, अमूमन जब शॉट अटेम्प्ट करने जाते हैं गेंद खड़ा हो जाता है। ये मौजूद ज़रूर है, लेकिन आई थिंक जुनेद खान इस किस्म की डिलीवरी में टेस्ट ज़रूर करेंगे शर्जील को। कल हमने देखा था कि 2 स्लिप्स के साथ यासिर शाह शुरू हुए थे, आज सिर्फ एक फील्डर स्लिप में है क्योंकि शर्जील सामने है। तेजी के साथ रन हासिल किया गया। बड़े बड़े कप्तान जो हैं जब शर्जील के खिलाफ खेल रहे हों तो फील्ड पर घबराते हैं। जानेहाना फील्ड जहां तक सेट करने का सवाल है, क्योंकि बड़े नामवर स्ट्राइकर हैं और तहत करने की आज भी सलाहियत रखते हैं किसी भी बॉलिंग अटैक को। झिझकते नहीं है बिल्कुल भी अपनी शॉट्स खेलने में। इनका जो अमूमी तौर पे बैटर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि आके 2-3 गेंदें देखें, इनको अगर पहली ही गेंद इनके एरिया में मिल जाएगी तो ये बाउंड्री की तरफ ज़रूर जाते हैं। ये थोड़ा सा इनके अगेंस्ट प्लान करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा बाउंसर, एक पैगाम दिया जुनेद खान ने कि आपको वो इतनी आसानी के साथ फ्रंट फुट शॉट खेलने नहीं देंगे। साइम अयूब हैरान रह गए और इसी पर पहले ओवर का भी खात्मा हुआ। सिंध ने बनाए हैं 3। तो अंदर से आवाजें लगा रही हैं, क्लब का मैच हो रहा है इसको। सर खुरम शहजाद जिन्होंने नई गेंद पहले दोनों मैचेस में मीडिया सेंटर एंड से की थी, आज पहली बार ये पवेलियन एंड से बॉलिंग करेंगे। दाएं हाथ से गेंद को स्विंग और सीम कराने की अहलियत रखते हैं। कल बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी इन्होंने सोहेब मकसूद के सामने, क्योंकि दाएं हाथ के बैट्समैन को ये ज़्यादातर इनकी जो गो टू डिलीवरी है ये आउट स्विंग करते हैं, जो कि बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए इन स्विंग होगी। इससे शर्जील खान को खबरदार होकर खेलना होगा, उनको रिस्पेक्ट पे करना होगी नई गेंद पे। कुछ अरसे से इनको देख रहे हैं कि बॉलिंग में इनको जो है वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा आ गया। अच्छी पेस से गेंद करते हैं, टेक को अच्छा हार्ड करते हैं, स्विंग भी करते हैं। कल भी इनकी जो बॉलिंग थी वो लाजवाब थी, बैटर्स को हिलने का मौका नहीं दिया था इन्होंने। ज़्यादा अच्छी लाइन नहीं थी क्योंकि फाइन लेग पर फील्डर दायरे के अंदर मौजूद थे। अच्छा आगाज़ किया है सिंध ने इस सीज़न का। इनके नए कोच बने हैं गुलाम अली, उन्होंने नए खिलाड़ियों का इंतखाब किया और एक नए दौर का आगाज़ हम कह सकते हैं सिंध के लिए। साइम अयूब, सऊद शकील को कप्तानी की जिम्मेदारियां सौंपी गई। साद खान वाइट बॉल क्रिकेट में अपनी सलाहियतें मनवाने के लिए बेताब हैं। पहले 2 मैचेस में क्योंकि दानिश अजीज़ और अनवर अली को ज़्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिल सका था, इसलिए आज एक बैट्समैन को कम किया गया, अबरार अहमद को मौका दिया गया। तो दूसरे स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे जाहिद महमूद के साथ। ये जा वो जा, ऑफ स्टंप के बाहर
खासी जगह मिल गई और इसी के नतीजे में खुरम शहजाद को सजा मिली। शर्जील को यहाँ पे गेंद कराना, आप खुद दावत दे रहे हैं कि वो मारे, और बहुत आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, लेंथ भी अच्छी थी और बासानी इन्होंने अच्छे बैलेंस के साथ 4 रन हासिल किए। टिप्टे बैट के साथ ये बहुत ज़ोर से शॉट मारते हैं, चाहे वो पुल हो या कट। यहाँ और इस तरह की जो पिचेस हैं जहाँ गेंद अच्छी पल्ले पर आती है, यहाँ अच्छी रफ्तार हो और साथ साथ बाउंस भी, तो ये चांदी हो जाती है। शर्जील खान जैसे खिलाड़ियों की जो बैक फुट पर खेलते हैं, लेकिन इस बार फ्रंट फुट से खेलने चले गए और मौका है, फील्डर पहुंच रहे हैं, लेकिन काशिफ भट्टी ने ये संगीन गलती कर दी। उन्हें खासी मोहलत मिल गई थी गेंद के नीचे आने की और आखिर में उन्होंने लो कैच पकड़ने की कोशिश की, जिसमें कामयाबी मिली नहीं। नई जिंदगी शर्जील के लिए। एक बार फिर उठा के खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार लेंथ वैसी नहीं थी, हल्की सी मूवमेंट थी। बहुत टाइम मिल गया था काशिफ भट्टी को और एक रेगुलेशन कैच है ये, लेकिन शायद आते हुए फील्डर की वजह से थोड़ा चूक गए, लेकिन ये ड्रॉप इनको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। उम्दा बॉलिंग खुरम शहजाद की, बाएं हाथ के दोनों खिलाड़ियों को उन्हें परेशान किया है इस ओवर में। अब जब तक शर्जील आउट नहीं होंगे तो जाहिर है कि जो काशिफ भट्टी हैं इनका वक्त अच्छा गुजरेगा नहीं फील्ड पर। इसकी वजह यह है कि शायद उनको ज़्यादा ऊपर कैच पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये बात आपने बिल्कुल जायज़ कही कि बंगल सही इनके सामने आ गए थे, उस वजह से भी झिझक हुई, लेकिन आखिर में इनको अंदाज़ा हो गया था कि फील्डर रुक गए और उठाकर खेला और गेंद सीधी हाथों में गई। इस बार कोई गलती नहीं बलोचिस्तान की जानिब से। और साइम अयूब जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे, 92 रन बनाए, आज एक से आगे नहीं बढ़ सके। ऑफ स्टंप के बाहर ऐसा महसूस हुआ जैसे गेंद रुक कर आई हो। लेंथ जो है वो ऐसी थी कि थोड़ा सा बॉल राइज कर रहा था, और इस तरह की लेंथ पे आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए स्क्वायर पे खेलना। सीधा क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन नुकसान उठाना पड़ा साइम को। 1 रन बना के वापस सिंध 8 पे 1। सिंध की बैटिंग लाइनअप में आपको ज़्यादातर बाएं हाथ के बल्लेबाज देखने को मिलते हैं। सऊद शकील कप्तान अब पहुंच गए हैं। जुनेद खान तो अपनी बॉलिंग जारी रखना है। स्पेशलिस्ट बैट्समैनों में से 5 ऐसे हैं जो बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं सिंध की टीम में, और बाएं हाथ के बॉलर्स ने इस बार चलता कर दिया। शर्जील खान पसपा हुए जो कट करने के लिए गए, बाउंस मिला जुनेद खान को, लेकिन अंपायर ने रोका है। शायद वो नो बॉल देखना चाहते हैं। टीवी अंपायर की मदद ली गई है इस वक्त, जो कि राशिद रियाज हैं। एक चांस ऑलरेडी मिल चुका है शर्जील खान को, और ये एक और चांस भी आप काउंट कर लें। जुनेद खान जो है ये आप देख सकते हैं कि उनने कानून शिकनी की है। यहाँ तक उनकी एड़ी का साया वो लग रहा है वो क्रीज के पीछे।
टीवी अंपायर का फैसला आ गया जो शर्जील के खिलाफ गया और इस तरह उस गेंद को लीगल करार दिया गया, क्योंकि जिस वक्त पाँव लैंड हो रहा था उस वक्त एड़ी जो है वो हद से आगे नहीं बढ़ी थी। इससे शर्जील खान को जाना पड़ेगा। उनने बनाए 7 और हसीबुल्लाह ने अच्छा कैच लिया जुनैद खान गेंद पर 8 पे 2। साद खान जो बड़े स्टाइलिश बैट्समैन हैं आज पावर प्ले में खेलने को पहुंच गए हैं। 22 साल इनकी उम्र है, 44 की अच्छी औसत है और अच्छा स्ट्राइक रेट है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शर्जील खान गए और हैदराबाद से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक और खान आए हैं, साद खान खेलने के लिए। 6-3 की ऑफसाइड की फील्ड है जुनैद खान ने जो खड़ी की है। टेक्निकली खासे सॉलिड हैं, गेंद की लाइन में आकर खेलते हैं, शॉर्ट गेंद से अच्छी तरह निपट सकते हैं, नई गेंद को भी खेलना जानते हैं। ये कट करने के लिए गए लेकिन गेंद तवक्को से ज्यादा उछल गई। अच्छा कैच लिया, कैच बहुत अच्छा था, लेकिन शर्जील खान क्योंकि बाउंस अच्छा मिल रहा है और जुनैद खान की जो पेस है वो अच्छी है, बेहतर ये होता कि बैक फुट पे कट करते हैं, क्योंकि फ्रंट फुट पे कट कर रहे थे इसलिए जो बाउंस था वो उनसे मैनेज नहीं हुआ। ऐसी बाउंसी पिचेस पे आपको अमूमन बैक फुट पे ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए कि आप शॉट्स को खेलें। हसीबुल्लाह का ये पहला कैच था उनके T20 करियर का। नए विकेट कीपर हैं बलोचिस्तान के, अच्छा एहसास हो रहा होगा। ये उनके बाएं तरफ खासी तेज जा रही थी उछलती हुई। अभी जब ये अंडर 19 के वर्ल्ड कप में विकेट कीपिंग कर रहे थे हसीबुल्लाह, तो सवालात थे इनके ग्लव वर्क पे, वहाँ पर कुछ इनसे गलतियाँ भी हुई थी, लेकिन इस सीज़न में इन्होंने अपनी विकेट कीपिंग पे भी खासा काम किया है। ग्लव वर्क खासा बेहतर लग रहा है। ये वो दौर आ गया वाइट बॉल क्रिकेट में, ख़ास तौर पर T20s में अक्सर देखा जाता है कि बैट्समैन को ही ग्लव्स पहना दिए जाते हैं, लेकिन हसीब बेहतर हो रहे हैं। बहुत उम्दा बॉलिंग जुनैद खान की और इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल शॉर्टर फॉर्मेट में हम बात करते हैं पहले ये टाइम, वही बात के बाउंस ज़्यादा था और ऐसी लेंथ थी नहीं कि आप इसको उठा के मारते, और वैसे भी जब पेस अच्छी हो बॉलर की तो उसको ऑन दी अप कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गेंद राइज करता जा रहा था। ये शॉट अगर स्क्वायर पे खेलते शायद ये नुकसान ना उठाना पड़ता। दूसरी स्लिप का भी इजाफा किया गया, क्योंकि दोनों ही बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर नए हैं। यहाँ जो एक सवाल कप्तान यासिर शाह से हो सकता है कि क्या वो जुनैद खान से एक ओवर और कराएंगे। दोनों बॉलर इस वक्त गेंद को स्विंग कर रहे हैं, खासतौर पर जुनैद खान दोनों तरफ इस ओवर में स्विंग करते हुए नजर आए हैं। उनको विकेट भी मिल रही है, उनका रिदम भी बेहतर लग रहा है, तो क्यों इंतजार किया जाए डेथ ओवर्स का। इशू जो है वो ज़्यादा इनको डेथ ओवर्स में ही आ रहा है, क्योंकि तवील बैटिंग लाइनअप है सिंध की। इसमें कोई शक नहीं है कि 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हो गया बलूचिस्तान, और जुनैद बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो मेजर चीज़ एड्रेस करने वाली है वो डेथ ओवर्स है, और इनके पास बॉलिंग बहुत मौजूद है, नए बॉल से डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा रन लिया खेलते ही
स्ट्रोक के साथ ही दौड़ना शुरू कर दिया था। साथ में एक और अच्छा ओवर, सिर्फ 3 रन जुनैद खान ने दिए और शर्जील की कीमती विकेट ली 11 पर 2। सिंध के दोनों ओपनर्स मैदान बदर हो चुके हैं। एक नई पार्टनरशिप मैदान में मौजूद है। ये दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जो आमतौर पर लंबी क्रिकेट में रन्स बनाते चले आए हैं। और इस तरह के हालात में जहां पर फास्ट बॉलर के लिए मदद हो, सुबह की मदद, तो ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। ऐसी सूरत हाल से कोई वजह नहीं कि निपट ना सकें सऊद और साद। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है दोनों, साउंड है। जब अच्छी पेस हो, स्विंग हो तो बल्ले को अपनी बॉडी के बहुत करीब रखते हैं, इसलिए वहाँ से मैनेज करना बहुत आसान होता है। और स्ट्राइक रोटेशन भी इनके लिए इनकी बहुत अच्छी है। बाल बचे, बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा। अच्छा स्विंग मिल रहा है जुनैद को भी, खुरम शहजाद को भी। और उससे ज़्यादा जो दाद देने वाली बात है कि लेंथ और लाइन दोनों की बहुत ही उम्दा। बार बार सऊद और हाथ से सवाल पूछ रहे, अभी भी मौजूद है। कोशिश इनकी यही होगी बलूचिस्तान की कि एक और विकेट हासिल कर पाएं इसी नए गेंद के साथ। एक और अच्छी दौड़ यासिर शाह थे मिड ऑफ पर, लेकिन वो नहीं रोक सके अपने ऑपोजिट नंबर को ये रन लेने से। सऊद ने आज टॉस जीता है। ये चौथे कप्तान हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टूर्नामेंट के पहले तीनों दिन पहले खेलने वाली टीमें ही जीती हैं। एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं। हालांकि रावलपिंडी के इस क्रिकेट स्टेडियम को हम कह सकते हैं कि ये चेज फ्रेंडली वेन्यूज़ में ही इसका शुमार होता है। T20s में वो करने के लिए गए, गेंद आई नहीं बल्ले पर। क्या वजह है? जो बैट्समैन हैं वो सही तरह यहाँ पर रन चेज कर क्यों नहीं पा रहे? बड़े स्कोर बनाने से भी कासिर है, छोटे स्कोर अभी पीछा करते हुए नाकामी का टीमों को सामना करना पड़ा। मरीना, देखिए जहाँ तक पिच की बात है, पिच अच्छा है, बॉलर्स के लिए भी कुछ है, बैटर्स के लिए भी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि थोड़ी सी प्लान की कमी है और इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं नज़र आ रही। अक्सर ये देखा है कि 1 डायमेंशनल क्रिकेट स्टार्ट हो जाती है। अब बॉलर्स तो अच्छी बॉलिंग जहाँ कर रहे हैं वहाँ जाहिर है आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। बुरी गेंदें हमने देखी हैं, जहाँ भी जिस भी बल्लेबाज को मिली उसका फ़ायदा ज़रूर उठाया। लेकिन अब अगर आप बात करें, सिंध अभी तक वाहिद ऐसी टीम लग रही है जो बहुत अच्छा इनका बैटिंग ऑर्डर एक तसलसल के साथ चल रहा है, टेक्निकली एक प्लान के साथ खेल रहे हैं। लेकिन बाकी जो रन चेज देखा है कोलैप्स हो गया एकदम, और इवन पहले बैटिंग करते हुए भी ज़बरदस्ती की शॉट्स मारने जा रहे हैं। यहाँ पे बाउंस अच्छा आ रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करके स्क्वायर की तरफ ज़्यादा खेलना पड़ेगा आज की सरफेस पे स्पेशली। पिछली गेंद भी राइज करती रही एंड तक, इसलिए अच्छा टाइम नहीं कर पाए। सुहेल मजहर नकवी टीम मैनेजर, गुलाम अली नजर आए थे। खुरम शहजाद बड़ी नबीतुली बॉलिंग कर रहे हैं। इस ओवर में भी उन्होंने सिर्फ 3 ही रन दिए, तो पावर प्ले में बोलबाला हो गया है बलूचिस्तान का 14 पर 2 4 के बाद।
अभी तक कोई भी बैट्समैन डबल फिगर में नहीं पहुंच सका है और सिंध की टीम खासी खबरदार होकर खेलने में मजबूर है। यार वही किया है जुनैद खान ने। इस फील्डिंग और 2 रन मिल गए। हम जिक्र कर रहे थे यासिर शाह ने जुनैद खान से तीसरा ओवर कराने का फैसला किया, क्योंकि जब एक बॉलर बहुत ही अच्छे रिदम में तेज बॉलिंग कर रहा है, दोनों तरफ गेंद को मूव कर रहा है, तो क्यों ना यहाँ पर किल के लिए जाया जाए। और ये बहुत अच्छी कप्तानी है। गो कि ये अच्छी फील्डिंग नहीं थी, लेकिन ये अच्छी सोच है यासिर शाह की, और इस सोच में ये मुश्ताक अहमद जो इनके हेड कोच हैं उनका भी अमल दखल नजर आ रहा है। विकेटें लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे का नहीं सोच रहे हैं। जब जाहिर है कि पुल आएगा तो फिर आप सोचेंगे दरिया अबूर करने से मुतालिक, पहले पहुंचा जाए उस दरिया के पहले किनारे तक। लेकिन आप की क्या सोच है मरीना के? रन्स रोकने चाहिए कप्तानों को, रन्स रोककर विकेटें ली जाएं, या विकेट लेने के लिए ही कोशिश की जाए, जो कि यासिर शाह यहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस तरह के फॉर्मेट में आपकी कोशिश ये ज़रूर होती है कि आप विकेटें लेने जाए, क्योंकि जिस तरह की सरफेस है रन आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगेन बात जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आप किस बैटर्स के अगेंस्ट किस बॉलर को ला रहे हैं। अगर हम अभी बात करते हैं, जो इशू है, ये बहुत शानदार शॉट थी, बहुत ज़ोर से मारा इसको, आउटसाइड ऑफ स्टंप मिल गई थी लेंथ, और सऊद शकील इस लेंथ को छोड़ते नहीं है। ऑफ साइड में 5 फील्डर्स हैं, लेकिन ये मॉडर्न डे बैट्समैन फील्डर्स और फासलों की ज़्यादा परवाह करते नहीं। बैकफुट से खेला, वैसे फोर्स कर दिया बड़े दिलकश तरीके से। बड़े आला टाइमर हैं, स्टाइलिश बैट्समैन हैं सऊद शकील। यूसी की ये खूबसूरत मिसाल थी। हम जो बात कर रहे थे कि आप किन बैटर्स के अगेंस्ट किन बॉलर्स को लाना चाह रहे हैं, ये दोनों टेक्निकली साउंड हैं, अपने बहुत करीब खेलते हैं बल्ले को रख के। जो इशू एड्रेस करने वाला था वो डेथ ओवर्स का ही था। जाहिर एक चांस लेना सही है इसमें, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि ये इन दोनों बैटर्स के अगेंस्ट जुनैद खान शायद इतने इफेक्टिव ना हो। एक बार फिर अपनी रिस्ट को रोल किया, इनकी कलाइयों में बहुत लचक है। बैक टू बैक 2 चौके लगाए सऊद शकील ने, और सिर्फ अपनी रिस्ट को लाकर रोका। बड़ा दिलकश स्ट्रोक था, काबिल तारीफ और इंतहाई दीदा ज़ेब। दबाव कम करने में कामयाब हुए सऊद शकील 2 चौकों की मदद से। स्कोर को अब 21 तक पहुंचा दिया, बल्कि 25 हो गया। गेंद गई विकेट कीपर के सर के ऊपर से, हुक करने के लिए गए, लेट हो गए सऊद शकील। जुनैद खान जिन्होंने इस बार बाउंसर फेंका, जो उनका रद्द अमल था पिछले 2 चौकों का। अटेम्प्ट अच्छी थी, अच्छा बाउंसर भी था, लेकिन बल्ला घुमाया जिसकी वजह से टॉप एज लगा, और जितनी उनकी रफ्तार है ये गेंद ट्रेवल करना ही था। थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा जुनैद खान के लिए। मॉडर्न डे क्रिकेट में डक करने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया हुआ है। इन 3 चौकों के बायस स्लिप को अब हटा लिया गया और रफ्तार में भी रद्दोबदल किया, लेकिन नतीजे में चाहे रद्दोबदल ना हो सके। आउटफील्ड बहुत तेज है, दौड़ते हुए गए काशिफ भट्टी, लेकिन गेंद उन्हें खासा पीछे छोड़ गई। इस ओवर में 19 रन सऊद ने समेटे, 5 के बाद 33 पर 2 सिंध।
33 for 2, Sindh after winning the toss and electing to bat first. Big wicket of Sharjeel that's already been sent back. A great movement, outward movement from Junaid Khan. Good to see him in action as Ahmad Butt now comes in. Got immense experience, so 65th game in T20s. Got a good economy, got a best of 4 for 27. Ali Yunus joins me and we see, I'd like to see, not for any particular reason of having a liking to one side in this match, it's just, let's have someone chase a score down. Let's have a look at the boundary of the last ball of the previous over. The last over, rather. Through covers. Is it once that movement, sideways movement stops, then it becomes easier. You can use the pace. Well, it's just been amazing to see that no team has been able to chase down score on this ground. This is the 7th match that we're witnessing, and the average score has been 159 in these last 6 games. And the chasing has not been easy. That shows that bowlers have enough help on this pitch. There's good carry, there's good bounce. I just love the way these pitches are being prepared. They're being prepared for that international sort of pitches. Pakistan is due to play in Australia. It's a Friday morning. If you've woken up late, having your breakfast at home, just to remind you that Sindh won the toss. Sharjeel, Saim Ayub, both the openers back in the dugout. Match 7 of the Kingdom Valley National T20. Here from the Pindi Stadium. Well, he's definitely one of the premier all-round cricketer in Pakistan, Ahmad Butt. He has the habit of playing cameos too. It's not a good start. That is not what you associate with somebody like Ahmad Butt. Usually what we see is he's very tight with his line and length. He has that habit of getting wickets and playing those cameos in the end. A very handy, a utility cricketer. Ahmad Butt is definitely, I would like him to increase his pace a little. That will make him a very good, very effective all-round cricketer. Overall, a good cricketer he is. But the pitches, Skandar, we have to talk about them. They've been brilliant in this tournament. On for 4. Balochistan is just letting it go from that last game and to now. It's just not playing up to that expectation of that paper. Where you look at that 11 and you say, no, this is a side who's going to fight. You can lose a match, but you can't do this. Absolutely. It happened. It started from that match against Southern Punjab. When they lost the match, they were in a commanding position. Then somehow they lost that game. I still cannot believe they've lost that match against Southern Punjab. And over here also, after having a great start, things are just slipping away from them. Yeah, the line will keep punishing you as a bowler. He's struggling at the moment. The previous over had 4 boundaries. This one already has 2. The Balochistan needs to pull their socks up now. It's a power play, yes, but you can't let them off the hook. You got 2 wickets. That is poor bowling. That's easy pickings. All he had to do was put bat on the ball. This is a good outfield to it. Just rushed away towards the boundary line. Yes, disappointment, definitely. But you cannot blame but yourself, Ahmad Butt. They were off to an excellent start in this game too. But this partnership, which is 35 now, gradually taking the game away. Red on, red on. They're a very good unit, this Balochistan side. If you look at their bowling lineup, the spin options, probably one of the best spin attack of this tournament. We've got Yasir Shah, got Kashif Bhatti, very experienced, both of the men.
They've got very good fast bowlers, and after Junaid Khan's inclusion, I think it's gone better. There's one, Junaid Khan, making a comeback. He was in England. He's just getting used to the conditions here, to the weather also. He can also bowl left arm spin. Oh, that's again poor bowling. Will run away for 4 towards leg stump. That is easy picking for somebody like Saad, who's so talented. He's not gonna miss out on those deliveries. I see what he's trying to do. Maybe he's trying to angle it into the left-hander, but he's just not getting it. He starts from the leg stump and he ends up down the leg side. Maybe, I don't know, just come round the wicket, create that angle and come into him. We saw yesterday, time and again, Imran Senior was just coming over the wicket. He was being hit by Sohail Tanveer. I was just wondering why some bowlers and some do not prefer to change the angle. Maybe it's the new ball, power play, you don't want to change the angle, but there's no rule. There's no such rule you can't do it earlier on. Well, what they've done is that fielder fine leg has gone deep. Yeah, now he's got protection there. So that's what he's trying to do. He's just trying to curb it into the left-hander. Power play done, 48 for 2. Bowling change, right arm over. Captain Yasir Shah bringing himself on now, because they're looking for a wicket. The partnership is 40 of just 23 deliveries. Imagine that, being from 8 for 2 in 4 overs. Now it's 40 for 2. It's just amazing. 48 rather. Yeah, they were 14 for 2 after 4 overs. You're given away 34 in over number 5 and 6 combined. That's just changed the whole course of the game in the favor of the batting side. Yasir Shah has been good with the ball in the previous match. Let's see what he can do here. Yeah, he'll put in all his experience in this one. Even if he can't get a wicket, he'll try and make sense of this 7.78 run rate, which has just been achieved in the last 2 overs. If you look at this partnership between Saad Khan and Saud, there's not really been some exceptional shots. It's been poor bowling more than the batting. They've been on the leg side, some boundaries given away, easy boundaries towards leg side. Baha is also in it. That's a good run. They will run well. These two youngsters from Sindh, Saud and Saad. Especially Saad, I'm really looking forward to see him play big. A lot is expected of him. He's rated really high in that Sindh camp, and rightly so. He's very talented. Pakistan is definitely looking for those middle order batters, and he's definitely one to look out for. Come on! Yeah, spin works, and there you go. The experience talks. Kept it away from the body, trying to cut that. I think Saud Shakil, that's a soft dismissal. The ball hurried onto it, wanted to cut it. That's a good wicket. Yasir Shah was looking for a wicket. Look at that. That's not where he wanted to play. Body not quite close to the ball. That's why it stayed in the air for a long time and carried it to the fielder easily. Saud Shakil looked good for his 18 runs. Caught by Asad Shafiq off Yasir Shah, 49 for 3. That's a good sign.
early morning. Good crowd build up. Yesterday in the last game, there were a lot of people in the ground, especially in that Shoaib Akhtar enclosure. It was almost half full. That is so heartening to see people coming in to support domestic cricket. And we're witnessing some great games here already. We're just into the 7th game of this tournament. We're just warming up though. But the winner to me is the curator, who's made these excellent pitches, given enough bounce, and we've been told that they've been prepared for the foreign tour, especially for the World Cup. That is why they're producing some bouncy pitches. Very good. As we see, Sarfaraz Ahmed now walks in. Good numbers. 16 50s, average 28. Strike rate also pretty impressive, 127, the best of 89. A slip in place. Yasir Shah realizing if they can get a wicket here of Sarfaraz Ahmed, they're definitely on top. Straight away off the mark. Let's have a look at a 50 up, the wicket of Saud Shakil. You see the angle of the bat is facing up, so the ball is bound to go in the air. He's not played it hard into the ground or to clear that fielder. This is a soft dismissal straight into the lap. Now also the weight shift was not there by Saud Shakil. Ball was going away from him. Played it way far from. Lost his wicket. Seven gone, 52 for 3. Sindh. Let's have a look what happened in power play. Balochistan started off brilliantly. That was a catch, drop catch early on. But lucky for Balochistan, it didn't hurt them much. This was the first wicket. Ayub wanted to go big, could only manage it straight to the captain. And this one was the biggest wicket. Shajil Khan. And then Saud Shakil joined Saad Khan. It looked good. Nice wrist work too. 48 runs they scored in 6 overs, losing 2 wickets, 7 boundaries. Their power play has been quite similar, 48 for 2 today, and in previous game we've seen 49 for 2 each. They've been quite consistent. Is it a good thing? They've been consistent in 40s. Didn't look to increase it. I think in T20s, if you haven't lost too many wickets, even if you're sacrificing one, 45 is what you aim for. 45, 50, that's good. Yeah, but I believe today there would be a happy camp after being 8 for 2, ending up power play at 48 for 2. There'll be a happy camp. They've recovered well inside that power play. As we see Kashif Bhatti, 62 wickets, best of 4 for 14. Very experienced campaigner. Nicely cut, but straight to the man. Could not quite find the gap this time, Saad. Very talented Saad. They went straight to Shad. Oh, hit hard. Just ease it for one, Saad Khan. That is what we know of him. Got good wrists also. Can hit big. A very good youngster to look out for in the future. Good captaincy. Just kept the slip for Sarfaraz.
He's too experienced. He'll just milk you away for singles early on in the inning. Sarfaraz Ahmed is very good against the spinners. They haven't been bad in the mid-overs as well, Sindh. We'll let you know some details on that, those numbers. If Sarfaraz stays out there, he always understands. You have a chat with him if the wickets have fallen. 3 right now. Now he knows his role is to bat all the way through. And sort of allow the space for the other batsman or the partner to express himself. 8 gone, 56 for 3. Shahzad was superb with the new ball. Just gave away 8 runs, getting 1 wicket. Junaid Khan started off well, but by the end of his 3rd over, he gave away a few runs. Ahmad Bhatt didn't have good outing for his first over, 15 runs. And Yasir Shah already has taken a wicket in his first over. I'm not sure if it was such a bright idea to give him the 3rd over when the ball stopped swinging. Just hold him on for the death overs. Sometimes what happens is that what's creating problems for the batsman, if that thing is neutralized, then you're asking for a bit of a gamble there. He's played it upish, but he still has control of it. Ahmad Bhatt in the deep. Yeah, you just mentioned about the ball stopped swinging. I thought it did swung till Ahmad Bhatt, but the line and the length was not quite there to use that swing by Ahmad Bhatt especially. If you talk about Junaid Khan, he looked tired for his 3rd over. I was really surprised too. It's upish, opportunity, but no. Play in the deep. Couldn't cover that ground. No, yeah, I'm saying stop swinging for Junaid Khan. Now you say he was tired. 12 balls and you get tired. He's just come back from England. There's a difference in weather. Conditions are different. He's trying to impress the selectors too. Trying too hard also. All these things matter. Why don't the batsmen get tired? Score 50s, 70s in the same weather with pads, gloves, helmets on. He's wearing 2 caps. One is his hat, the other one is the thinking hat. Well, if he has to run for 6 consecutive balls like the fast bowlers do, they do get tired too. And then again, they do get rest if they rotate the strike. Bowlers don't have that luxury. They have to come at you hard every delivery, running in with the same pace, bowling with the same pace. Stammer boundary. And the over. 9 gone, 63 for 3. The breeze is there. We haven't seen that in the last 3 days that we have been here. It's a different morning, a bit cooler. That will make life much easier for these cricketers. Oh, well bowled, well bowled, well bowled. That's a good delivery. Straighter one.
Sarfaraz Ahmed does this for a living. He plays this sweep shot. That's his favorite shot. Execution from Sarfaraz Ahmed almost on every delivery when he attempts this sweep shot. It's 100% ratio that he will be successful. So good with that. Why is that? All these players coming from Sindh or Karachi side, they've been very good with those sweep shots. We don't see much here from players coming from Punjab or Northern. It comes from practice. Keep your house clean and you know how to sweep. I don't know. There are batsmen who like that shot. I mean, it's again, Yunus Khan used to do that very well against spin. But still, he played all his cricket in Karachi. That's the difference that I'm talking about. Maybe we are street smart cricketers, that you can say that. But coming back to your point, a quick one before we finish our stint regarding Junaid Khan or any bowler getting tired after 12 deliveries, slightly disagree. It shouldn't be the case. 12 deliveries. I mean, you're talking about short spells, short bursts. It'll be on the bounce. No, he didn't get it. The bounce was pretty good. Just went past that player there at long on. Another boundary. The boundaries are coming in off and on. They're keeping that run rate going of 7+. So yeah, it's just I mean, this is what you do. He's got around, what, how many games? 160 T20s in his career, Junaid Khan. It's just like you telling me in the second game that I'm tired in my 4th stint. I mean, could have spoken a lot today. you were bored then tired yesterday, somehow. Yeah, Junaid Khan, if you talk about it, he's 32 years of age now. I tell it because of the last, when he finished his over. Oh, there's inside edge. No, umpire has given him out. That is a poor shot to attempt. Saad Khan looked so good against the run of play. Wanted to go big to Kashif Bhatti, and it was urgent LBW. Oh. Yeah. I don't think. फास्ट बॉलर्स की तरह जो 2 स्पिनर्स बॉलिंग करने के लिए आए, बलोचिस्तान को उन्होंने मायूस नहीं किया। यासिर और काशिफ भट्टी ने भी एक विकेट हासिल की। हारिस सुहेल एक और बाएं हाथ से फिंगर स्पिन करते हैं, अब उनको लाया गया है। ये भी खासे कारआमद बॉलर हैं, बड़े अंडररेटेड बॉलर समझे जाते हैं। हारिस सुहेल उनको खेलने के लिए लाया गया है, लेकिन खासी हैरानी हुई कि हारिस जो हैं, ये भी इनके 10 मैचेस जो नज़र आ रहे थे, इन्होंने इससे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है T20s में हारिस ने। ये लगी पैड पर और बल्ला लग गया था। अंपायर शायद वही मुत्तला करने की कोशिश कर रहे थे हारिस सुहेल को। जिस तरह उन्होंने ये अपील सुनी अनसुनी कर दी।
इनसाइड एज माय फ्रेंड, अंपायर आसिफ ने कहा हारिस सुहेल को। उसके बाद इशारा भी दिया। ये पुराने अंपायर्स होते थे, महबूब शाह, खिजर हयात, अमानुल्लाह, ये इशारा भी किया करते थे अपने फैसले की वजाहत के लिए। इस बार ये इशारा फौरन ही अंपायर ने दे दिया बैट्समैन के खिलाफ। सिर्फ ये देखना था कि क्या इम्पैक्ट तो लाइन के बाहर नहीं हुआ। काफी मायूस होंगे अपनी शॉट सिलेक्शन से। साथ जैसे आपने कहा, ऊपर नीचे विकेटें नहीं गिरनी चाहिए इस फॉर्मेट में, स्पेशली आप इनिंग्स के दूसरे हाफ में आ गए हैं और 2 नए बैट्समैन क्रीज पर मौजूद। अच्छा शॉट खेला, फील्डर आ रहे हैं लॉन्ग ऑफ से, मंगल जई ने इसे कट ऑफ किया। गेंद उनके उल्टे हाथ की तरफ जा रही थी। बाएं हाथ से थ्रो करते हैं मंगल जई, इनको दाएं जानी दूर जाकर उन्हें रोकना पड़ा। अच्छे फील्डर हैं, अच्छे उभरते हुए क्रिकेटर हैं अब्दुल वाहिद बंगल जई। एक बैट्समैन कम किया सिंध की टीम ने अपनी लाइनअप से, इसलिए दानिश अजीज पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। 25 की एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट। और उठाकर खेला शानदार तरीके से, 4 रन्स। इससे सीधा शॉट नहीं हो सकता था। दीदा दलेरी से पिल पड़े लेफ्ट आर्म स्पिनर पर दानिश अजीज और फुल टॉस बना लिया। अच्छी फॉर्म में नहीं थे लेकिन फुल टॉस का बखूबी इस्तेमाल किया। बासलाहियत खिलाड़ी हैं, सिंध को ज़रूरत है आज दानिश अजीज की, क्योंकि अभी तक टॉप ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया था। आज टॉप ऑर्डर जल्दी सिमट गया सिंध का। क्या ये अच्छा जाविया बना रहे हैं हारिस जो हैं दानिश अजीज के खिलाफ, जो लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। आप नहीं समझते ये तो इनके पाले में ही गेंद करने के मुतरादिफ है। हारिस काफी अरसे बाद बॉलिंग करते हुए मैं देख रहा हूँ उन्हें। कोशिश शायद ये भी है कि यहाँ पे जो ऑन साइड पे जो हिट है वो अगेंस्ट द विंड है और काफी बड़ी बाउंड्री है, 72 कदम की बाउंड्री है। तो स्पिनर्स चांस ले रहे हैं, नए आए हैं, शायद उन्हें अटेम्प्ट कर रहे हैं कि आप शुरू में बड़ी हिट के लिए जाएं। 11 के बाद 77 पर 4। शाबाश। Relax them. Right, relax. कैश। काशिफ भट्टी अपना तीसरा ओवर करने के लिए पहुंच रहे हैं। बेशतर टीमें जो हैं उनमें आपको नए नए चेहरे नजर आ रहे हैं। जिस तरह सिंध की टीम में कई नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब में बाज़ चेहरे नए हैं। नॉर्दर्न की टीम में हमेशा की तरह नए नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, लेकिन ये जो बलूचिस्तान की टीम है इसमें आपको ज़्यादातर आजमूदाकार खिलाड़ी नज़र आते हैं। अच्छा स्वीप शॉट, कोई मौका नहीं शान मसूद के लिए। सरफराज अहमद जिनका ये ट्रेडमार्क शॉट है, इससे बहुत ज़्यादा रन्स उन्होंने अपने करियर के दौरान बनाए हैं और इस बार भी पूरी महारत से खेलने में कामयाब हुए। स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं और सरफराज बैटिंग कर रहे हैं और स्वीप शॉट देखने को ना मिले ये हो नहीं सकता। दूसरा चौका स्वीप शॉट पे हासिल किया। लाइन खराब थी यहाँ काशिफ भट्टी की, पूरी दावत दी उन्होंने सरफराज को। एक और हार्ड स्वीप, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से, क्योंकि गेंद को खेला था इससे ये स्क्वायर के सामने गई। बड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं स्पिनर की जब ये शॉट उनके सामने बखूबी खेला जाने लगे। डिफरेंट लाइन से सरफराज खेलते हैं। जिस तरह पहला तो गेंद ड्रिफ्ट हो रहा था उनके पैड्स पे, उन्होंने स्वीप खेला। दूसरा ऑफ स्टंप से लपेट कर खेला, काफी रेंज है उनके पास। बहुत ज़्यादा कैश, बहुत ज़्यादा। कुछ जो बेसिक्स हैं जो हर स्वीप शॉट की हैं, चाहे कोई भी लाइन हो, बल्ला ऊपर से नीचे तेजी से आता है और दूसरे ही के शाबाश कैश का हेड स्टिल होना चाहिए किसी भी स्ट्रोक खेलने के लिए।
हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान की जो टीम है इसमें जो है आपको ज़्यादातर ऐसे खिलाड़ी नज़र आते हैं जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है, सरफराज अहमद की तरह। ये वो स्वीप शॉट जिसका आप जिक्र कर रहे थे बिल्कुल सर साकिन रहा, और इसके लिए लेंथ भी ज़रूरी होती है। आमतौर पर लेंथ गेंद पर ये शॉट ज़्यादा बेहतर तरीके से लगता है। गेंद ज़्यादा आगे गिरी हो तो उस पर मुश्किल भी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि आपको अपना घुटना टेकना होता है ज़मीन पर नीचे जाकर, तो अगर लेंथ बॉल नहीं होगी तो आप उसके नीचे से आप घुसकर नहीं खेल सकते स्वीप शॉट। इन सरफराज एक बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं स्पिन के खिलाफ, न सिर्फ स्वीप बल्कि हर किस्म के शॉट्स उनके पास हैं। ओवर का इख्तिताम 85 पर 4। दो विकेट जल्दी गिर गई थी, अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन वो दोनों बैटर्स भी एक के बाद दीगरे आउट हो गए। अब सरफराज और दानिश अजीज पर काफी जिम्मेदारी है। एलबीडब्ल्यू आउट हो जाएंगे। इस बार अंपायर ने बिल्कुल ज्यादा सोच विचार नहीं की, फ्लैट डिलीवरी थी। यासिर शाह जिन्होंने लातादाद विकेटें हासिल की हैं एलबीडब्ल्यू और बोर्ड की सूरत में, एक बार फिर अपनी मददाब के तहत उनने ये कामयाबी हासिल की और लेंथ को बिल्कुल समझ नहीं सके। गेंद आगे थी, पीछे खेल गए। दानिश अजीज आउट होकर वापस जा रहे हैं मायूसी के आलम में, सिर्फ 10 पे। बिल्कुल ही क्रीज पर ट्रैप हो गए, उनके पैर हिल नहीं सके। बैकफुट पर जरूर गए थे लेकिन अपनी क्रीज की डेप्थ भी इस्तेमाल नहीं की। बिल्कुल क्रीज की लाइन पर दोनों पैर उनके जमे रहे। मायूस होंगे इस डिसमिसल से। 10 रन बनाकर आउट हुए 86 पर 5। अनवर अली आने वाले नए खिलाड़ी, और ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी अजनबी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा क्रिकेट इन्होंने इकट्ठे खेली है, क्लब क्रिकेट, अंडर 19 क्रिकेट से लेकर तमाम ही लेवल्स पर। पिछले दोनों मैचेस में दानिश अजीज, अनवर अली को ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा था बैटिंग का। आज दानिश अजीज निमट चुके हैं, अनवर अली जब आए हैं अभी भी 8 ओवर्स बाकी हैं खेलने के लिए। देखिए 5वीं विकेट गिर गई और यासिर शाह इन्होंने बहुत से शिकार किए हैं लेफ्ट हैंडर्स को। जब ये बॉलिंग करते हैं तो ये और ज़्यादा मुख्तलिफ बॉलर लगते हैं। बॉलिंग क्रीज पर ज़्यादा खुद को बेहतर महसूस करते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। जब ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हूँ, कभी कभार ऐसा लगता है कि इनका जो एक्शन है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में कंप्लीट होने लगता है बाएं हाथ के बैट्समैन को गेंद करते हुए। थोड़ा सा वो बॉल को पुश करते हैं ऑफ स्टंप के बाहर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए, वहाँ से उनको थोड़ा बहुत परचेज भी मिलता है। वही गेंद अगर वो राइट हैंडेड बैट्समैन को करेंगे, इस बॉल के बाद बात करते हैं, तो वही टांग की तरफ ड्रिफ्ट हो जाती है बॉल। विकेट से ज़्यादा करीब आके चौथी ऑफ स्टंप के करीब बॉल करते हैं लेफ्ट हैंडर को, और वहाँ से अगर ज़रा सी टर्न मिले काफ़ी डेंजरस होते हैं, और बॉल सीधा रहे तो आउटसाइड एज को भी ये थ्रेटन करते हैं। सरफराज की महारत स्पिन के खिलाफ, इसमें कोई दो राय नहीं।
यही मैच के अंदर एक मैच इस वक्त शुरू हो चुका है। यासिर शाह बनाम सरफराज अहमद। सरफराज इस वक्त पाकिस्तान में स्पिन को सबसे अच्छा खेलने वालों में शामिल हैं। दूसरा रन लेना चाहते हैं और ये दौड़ जाएंगे दूसरे रन के लिए। अनवर अली और सरफराज अहमद के दरमियान हमांगी का कभी भी फुकदान नहीं रहा। 13 ओवर्स के बाद 90 पे 5। चेक करना। हाँ फुल टॉस शेप नहीं मारना किंगडम वैली पे। ज़ीशान ज़मीर, उनके साथ आसिफ महमूद हैं। ये जो फराज और ज़ीशान के दरमियान आसिफ महमूद हैं, हैदराबाद के ऑलराउंडर, उभरते हुए ऑलराउंडर हैं। दाएं हाथ से ये पेस बॉलिंग करते हैं। हो सकता है कि आगे चलकर हम इनको भी खेलते हुए देखें। काफ़ी क्रिकेटर्स उभर के आ रहे हैं हैदराबाद से। अच्छा खेला लेग साइड में। पार्टनरशिप की ज़रूरत है यहाँ पर सिंध की टीम को। टेबल टॉपर हैं, 2 में से 2 जीतें हासिल कर चुके हैं। शाबाश। सिंध ने अपना पहला मैच 147 रन बनाकर जीता, दूसरा 190 रन बनाकर जीता। और आज भी यहाँ पर विकेटें गिरने के बावजूद जो अक्सर देखा गया है कि जब यह के बाद दीगरे किसी टीम की विकेटें T20 में गिरती हैं तो बैटिंग में एक एनर्जी लेवल कम हो जाता है, वो कम होने नहीं दिया सिंध ने। रन्स इनके बनते चले आए हैं। अभी भी इनके रन्स जो हैं वो अच्छे खासे हैं। लेकिन यहाँ से एक पार्टनरशिप जो है वो पनपना होगी और फिर ये पहुँच सकते हैं 160 165 तक। अभी भी इनमें अहलियत है। गेंद बल्ले से हम किनार हुई और ये दूसरा रन भी बन जाएगा। किंगडम वैली नेशनल T20 कप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। आप किंगडम वैली के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जाइए, आपको वहाँ से मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बहुत ज़्यादा आप इनामात जीत सकते हैं और आप नए किंग बन सकते हैं। लेकिन ये जो क्रिकेट की वादी है, इसमें आज जो बलोचिस्तान के शाह हैं, आज उन्होंने ही अपना बोलबाला कर रखा है। उनके बॉलर्स ने किंग की बात हो रही है तो जो सिंध के दोनों बैटर्स हैं, अंडर 19 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया था सरफराज की कप्तानी में और अनवर अली की शानदार बॉलिंग की बदौलत। एक और उम्दा स्वीप शॉट, यहाँ पर रन्स मिल जाएंगे। दूसरे रन के लिए भी बड़ी आसानी से पहुँच जाएंगे। कम उम्र में ही ये दोनों शहनशाह बन चुके थे। वर्ल्ड कप विनर्स 2006 में पाकिस्तान ने भारत की टीम को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। 14 ओवर्स के बाद 96 पर 5। किस गेंदों पर 17 रन बनाए हैं सरफराज ने।
कट करने के लिए गए और मिस फील्डिंग हुई, 4 रन बन जाएंगे। गेंद वाइड थी, बाउंस जरूर मिला यासिर शाह को। फील्डर को ये गेंद रोक लेना चाहिए थी। जुनेद खान थे शॉर्ट थर्ड मैन पोजीशन पर। बाहर बॉल था इसलिए अनवर अली को मौका मिला हाथ चलाने का, लेकिन एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से बाहरी किनारा लगा। जुनेद खान स्ट्रेच नहीं कर सके और गेंद उनके हाथ को छूती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। और जल्दी करनी पड़ी असद शफीक, और गेंद को उठाने से कासिर है, वरना विकेट मिल सकती थी। अभी भी ये दोनों खिलाड़ी खतरों से खेल रहे हैं, मुश्किल में आ सकते थे। सरफराज अहमद हालांकि बहुत तेज दौड़ते हैं। अनवर अली ने ये दिखाया असद शफीक को कि मैं आपसे दूसरा रन भी चुरा सकता हूं, पर असद ने उन्हें काफ़ी आंखें दिखाई। असद ने काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है सिंध की तरफ से, कराची की तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ, और साथ अच्छी कॉमरेडरी है दोनों टीमों के दरमियान। यहाँ पे मुकाबला इस वक्त बिल्कुल एक तनाव की सूरत हाल में है, क्योंकि सिंध को पार्टनरशिप चाहिए। 100 का हिस्सा तो उन्होंने अबूर कर लिया है। ये 5.4 ओवर्स बाकी हैं। कोशिश करेंगे कि कम से कम 160 तक जा पहुंचे। यही वो टोटल था जो बलोचिस्तान कल हासिल नहीं कर पाई। नफसियाती हद जरूर है 160 की। सरफराज अहमद ये बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। उन्होंने जो मिडल फेज में जिम्मेदारियां हैं अब तक निभाई हैं, क्योंकि यहाँ दोनों एंड्स पर ज़्यादा स्पिनर्स से पाला पड़ा है, इसलिए उनके रन्स रोकना मुश्किल हो रहा है। करीब के फील्डर्स को भी एक बार फिर नर्म हाथों के साथ खेला और फौरन ही उन्होंने अपनी क्रीज छोड़ दी, क्योंकि एतमाद था पूरा अनवर अली पर। बाउंड्रीज आसानी के साथ नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी स्ट्राइक से बार बार हट रहे हैं, स्पिनर को सेटल होने का ये मौका दे नहीं रहे। यहाँ से भी उनको 160 के मुतालिक सोचना होगा। कल सदर्न पंजाब की टीम जो है उसने फाइट बैक किया था इसी अंदाज में, जब मोहम्मद इलियास और उनके हमरा शारून सिराज थे, वो अपनी टीम को 150 के आसपास ले जाने में कामयाब हुए और उसके बाद उन्हें हरा दिया बलोचिस्तान को। तो इसी तरह की ही सोच रखना होगी, क्योंकि आप गिर के उठ सकते हैं। सरफराज के स्वीप शॉट्स काफी लो रहते हैं, और उनके हाथ भी काफी नीचे रहते हैं। ऊपर से नीचे बल्ला तेजी से आता है, और लेंथ और लाइन कहीं भी हो वो फैसला कर लेते हैं स्वीप शॉट खेलने का। तो अच्छी एक्सिक्यूशन करते हैं। बैक लाइव अनवर अली और असद शफीक अभी भी एक दूसरे के मुखालिफ। 15 ओवर्स का इख्तिताम, सिंध की टीम कम बैक करते हुए 104 पर 5। That's the comparison, power play, middle overs and depth. So far, Sindh today have seen a little bit of trouble. But right now it seems like Anwar Ali and Faraz Ahmed have a very important role to play. 5 down on 104, last 5 overs. Where can they take this target? Still not all is lost, Marina. You talk about Sarfaraz being there. We mentioned about this, he'll look to play all 20. And then you got Anwar Ali, who can hit the ball big. So
If they can get quick fire 2 or 3 overs out here, you fancy 150. But you can say that this game has gone a bit of a seesaw. Started so well, 14 for 2. Balochistan at the end of the power play, they ended up giving almost 50. 2 overs cost them 34. Suddenly thought that Sindh is racing away with the game. And then the next 5 or 10 overs has cost them another 3 wickets. So, I mean, if you're Balochistan, you'd probably say we are in good position. But they got to really bowl well in the last 5. Because they know after this is Mir Hamza, Abrar, Zahid, Suhail Khan. So why not concentrate on the other side of Sarfaraz after Anwar Ali? So let's see. 30 balls, good sides can put up 70 if they like. And as far as Balochistan is concerned, death bowling has been their issue since last 2 games. The big reason why they brought back Junaid. Problem is they've got only 1 over left of him. Then Talatin, they've got Ahmad, but the spinner might share the overs. And Anwar is going to target. They are going to unleash, and Sarfaraz probably the anchor role here. We've seen quite a good bounce on this surface. But really, he just crouches a lot. From there, he generates the power. Very stable head. Just the hands most of the time do talking. Look at that crouching tiger in this stance. Gets the ball into his eye line. He prefers it that way. Coming back for 2. We crouch so much. You're trying to eye that. Even if you notice, Sarfaraz, he does that against fast bowlers. Their knees are bent and they're crouching, just trying to get the ball more into their eye line. Have a look at that. And then from here he goes deep later on. Right now he's just playing from where he stands. But when he wants to hit it big, he goes really close to the stumps. That can be very helpful, especially in subcontinental. When there are conditions like with good bounce, some serious pace coming off from the surface, at times with this stance, it's hard to go on back foot. Usually these two like to crouch and then commit a little bit more on the front foot. When there's space and bounce and you have milliseconds to decide, you might fall behind in going on that back foot quickly. High back lift and just into crouch. Anwar Ali is a more exaggerated form of that. Sarfaraz. Yeah. Oh, well done. Junaid Khan down on long on area. This should have been stopped. Shouldn't be a problem. Sarfaraz was yelling for a couple. It was timed well, but not that well. The dive, mistimed dive from Junaid. Was pretty late on it. Fielding has been a bit of questionable. There's a crouch. Really good transfer of weight onto the front foot. You talk about similar stances, Marina. You talk about Sarfaraz, someone. There's one, Hashim Amla used to do that. But then Hashim Amla had a trigger movement as well. He was so good at it. And I don't know. I mean, you've been right there. Pacing delivery is a new ball. So
You can tell us. I'm not saying that you endorse this stance, but how does it help to crouch that much and then get into that position? What if you end up with a short ball? That's exactly what I was saying. It's really helpful in subcontinent conditions where you rely on front foot. There's not much bounce to be offered or pace. But when you go outside subcontinent, when there's some decent pace coming off the surface, you've got bounce, this stance probably will affect you when facing short ball. When you see Sarfaraz, whenever he plays the cut shot, he plays with the similar stance. He doesn't really go off to the back foot. There's no back and cross movement. And for a millisecond, if you're facing a really decent bowler with some serious pace, you might get in trouble. Anwar Ali, definitely, as you said, it's very exaggerated. He crouches a little more. We haven't seen him playing those shots off the back foot. He stays on the front foot whenever he wants to connect short ball or cut. But this stance can actually expose you against pace. Unless if you're Brian Lara. He used to have that high back lift, keeping a bit low. But then he used to ride the bounce as well. He could get onto tip of his toes. That's upish and gone. Just when he played that shot, he knew he's made a mistake and he was livid with himself, absolutely angry, and yeah, he should be. What a time to lose your wicket, Sarfaraz. Just when it looked like that things are working for him and for Sindh. A very casual shot, way outside off stump, should have been punished into the boundary. But he just launches on it, a half-batted shot. And a soft dismissal for him. Gone on 29, then 6 down on 113. Mir Hamza comes out after Sarfaraz's dismissal, so he'll have to rebuild again. They're back to square one. Sindh 6 down for 113. They defended a low total in the opening match of the Kingdom Valley National T20, but why put yourself in that position again? 147 was what they defended. Was used slightly. Thank you. Sarfaraz lost his wicket and he had all the right to be angry with himself. A good player understands his responsibility, a senior player, and he knows that he's made a mistake. It cannot be rectified. Let's have a look. It's wide outside the off-stump, a bit of a loose shot. It's a soft dismissal, and then his reaction. He just knew it. Wish could return and change time. Shabash, 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 shabash. One there. It was nicely tossed up outside off stump, and I think Sarfaraz was looking to play into the covers, but threw the shot quite early, and that's why it carried top edge. It's not a good time to lose a wicket. Now Hamza and Anwar was on 16. They have less time to adjust. Oh, very well bowled, very well bowled, very well bowled. Excellent bowling, excellent bowling. बहुत आला Kashif bhai.
Seen some decent bounce. We were talking about that crouch stance. It's also about how you adjust, and you know that you have a certain stance, and at international level you will be tested. We've seen Ricky Ponting doing that, Jack Callis. They have that trigger movement, initial front foot movement. They come onto it and then they push back very quickly. It's also knowing about your stance, knowing about your weaknesses and adjusting quickly to it. Since batting this year in the national T20, look at their power play. They've been very consistent, Marina. 49, 49, 48. Middle overs 92. That was a big one. They scored in 191. That chunk. We'll come back to that. Puram Shahzad comes in again. The last 5 overs where we've seen the problem lies, not just Sindh. If you actually go back into these 6 matches that have gone, all the sides chasing have lost. It just tells you one thing, that they've been in good positions after 10 overs or 13 overs, but they've not been able to finish the games off, which means they're lacking either power hitters or someone who has the ability to take the game deep. Took in 6 games, and it's not like that the games were out of reach. They were... When you have 56 runs of 30 balls, you'd say that's chaseable. 6 wickets in hand, 4 wickets in hand. He hasn't got that on the bat as he would have liked. And still gets it over. Hussain Talat had it in his hands, but just tips it over at the last moment. I'd still say Mir Hamza didn't get it in the sweet part of the bat, but still manages to get the ball to cross. Well, it's a chance and extra runs. It was on the back foot. The weight transfer never appeared, but this should have been taken. Hussain Talat is a decent fielder. Tried to grab onto it. He really couldn't even flip it back. Just went over the boundary. That's not something Balochistan would love. Because Mir Hamza and Anwar, they can hit big. Would love to leak runs. Oh, he's dropped it. He's just spilled it. He's coughed it up, whatever you want to call it, and that's Asad Shafiq. 2 and 2 for Mir Hamza. Another chance. Good that he's trying to bounce it up. We've got good bounce there. Got tall on him, but Asad Shafiq, usually really exceptional. Seems like he really couldn't get underneath the ball. Hands were way down. In front of his, it wasn't in front of his eyes. That's not a good technique from him. Wide. So coming back to that particular point I was trying to tell you, that it's all about the last 5 overs where they've been unable to accelerate as they would have liked. That's a dropped catch from Asad Shafiq. I really don't know what to call it. He's in a good position. He's lost it in the sun, where he's
Just spilled it out. So yeah, it's the ability to finish the game off. And we see that graphic again where we showed you Sindh's performance in this tournament up till now and how they've been consistent in the power play. 49, 49, 48 for 2. They've accelerated from 7 to 15. And then in the last overs, it just gets a little weak. That's gone up. Should be taken now. Yes. RS Sohail gets the catch, and that finishes Anwar Ali's stint as wicket number 6 falling, is number 7 rather, and it's 126 on board. Balochistan is exploiting the bounce in the surface. Another good delivery, well-directed one. It just kept on rising. He was in no shape to play that shot, Anwar Ali. RS, he doesn't drop many. Can say it's a big wicket to fall. Anwar Ali goes on 18, Sindh 126 for 7. Sohail Khan, 123 matches. Sohail can actually hit the ball big. They can still get there, 150 if they want. 2 overs after this. Good ball that Sohail Khan can hit the ball big, as I was saying. That's the wicket. Hurried on to Anwar Ali's bat. A little late on that shot. What's with the batsmen? Every time when they get out, they look at their bat as if it's the bat's fault. You look at the toe end of the bat. I have to find something to blame at least. So sometimes you know you have a set of bats. I mean, if you're top order batter, you always look at your bat. You look at the feel, which one makes you feel good. It's so much psychological as well. It's one fine day, something just doesn't feel right about a particular bat, and you say no. Have a look at this, where they should accelerate. Not just Sindh, many others. In the death overs, 27, 49. I'd still take 49 because it was a high-scoring game. But most of the teams have not been able to do much in the death overs, especially the sides chasing. I think it's various factors. It helps a lot if a settled batter goes deep into the innings. Again, it depends a lot how the opposition is bowling at you. Junaid Khan is back, and he'll ask some questions to Sohail and Hamza. But I felt that probably all of a sudden teams realize that they're falling behind their allotted target, which they think as a team would love to achieve. And oh, that's a no ball to start off. You can associate that with Junaid Khan. These are the freebies that you look for. A side that's struggling to put runs on board, they'll cash it out. Extra ball, you can't get out on that. Well, it's a big no ball. Free to batsman. 7th no ball of the tournament. It's just game 7, I'm sure. We'll get a bigger number by the end of it. The spinners bowling no balls, that's a big one.
So 2 no balls. This is a free hit. Mir Hamza, can he put it into the stands or a boundary? Full toss in the air. He won't be out. Yasir Shah will catch and throw it back. It's never easy to deal with those low full tosses coming at you at some decent pace. Hamza tried to club it, but really couldn't find the middle of the bat. But this has been Balochistan's problem, the death overs. That toss, Yasir did mention that we need to have resolute plan how they can assess, put their bowlers back with a plan. Yeah, he's moved across, impacts outside the off stump. He's on the move and the ball hits him. Shuffling across, trying to work it into the leg side. Usually he loves to go straight. Sohail Khan, he can hit big. Not going to be easy with, especially against someone, Junaid Khan. Got decent pace. Changes in the field for Mir Hamza. Third man is now being sent back to the boundary. Long off coming inside the circle. Probably wide Yorker, that's the plan. This time he's got to be out. Oh, just dropped short. Runs here because it's deflected. A complete 2. He wasn't on screen, but I was watching Yasir Shah, the ball coming to him. He was a little slow to realize that it's going to drop short. For a moment, he thought it's going to come right into his hands. You see, even the batsman thought so. Yasir was very late onto it. Suddenly realized it's not going to come to him. He had to rush. Low ball. Hamza just trying to club everything into the leg side. Now third man is back inside the circle. They've sent it off back. Low ones, these are really important, but again, the areas where you want to pitch them will make the difference. Excellent bowling, excellent bowling. Good ball that. It's very tough to put those away. Get them in the block hole, or you can bowl a wide Yorker. You're quite tough, and especially with the tail-enders. Fast bowlers holding the bats. There'll be a problem if you bowl it in the slot. Otherwise, you're better off keeping them tight and squeezed up as a bowler. Or change of pace, that works. Junaid was always very good with that. 19 gone, 132 for 7. Shabash, 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 shabash. आपको बता सर मिडल स्टम्प है Last over of Sindh's innings, they've opted to bat first. How many more can they add? I'd like to see somewhere very close. If they can get 150, I'll be saying that they've done well from where they have been throughout the innings. They need 18 of this over for that. Sohail Khan, it's about time. We know he can hit it big. Not a nice way of letting it go. One for the over. That's a brilliant ball. Khurram Shahzad is really fired up.
Giving Sohail Khan some taste of his own medicine. Well directed, flying over his head. He did well actually, Sohail Khan, to duck it. It's the last over of the innings. I would expect him to swing his bat, get a top edge or something. Not even saying a ram shot. I think he wasn't expecting it. There, that's more like it. Instead of you length, and he'll put you away. He can hit it big. Smiles for Khurram Shahzad. He's been dispatched. Have a look at that. Just a step down. That length, as you said, is going after you. Well, that's a good hit. They need a couple of more of such middled one traveling to the boundary. A decent pace. Alright, that would have satisfied Sohail Khan. He's been searching for that big hit. Loves to bat. What's it going to be from the bowler now? Another fuller one's been driven down. Just a single there. He hit it well. Fielder has got it covered. 3 balls to go in the innings. Hamza, now it's his turn. He did had a couple of swing and misses, trying to force shots into the leg side. I don't think that Khurram Shahzad would allow him to do it. Could also capitalize on the offside. Boundaries can help Sindh reach a decent total. Full toss. It's played in the air and again drops short. He's got a couple of full tosses, Mir Hamza, but he hasn't not been able to put it away. He's been lucky as well, been dropped twice. In fact, dropped once, the other one was like half a chance. Very hard at times to deal with low full tosses because you're looking to hit everything. At times you go hard on it, but it's important to meet a full toss in front of you with your extended arms. If you allow it to come close to your body, you don't have the room. Unless you're looking to scoop it or just ram shot it somewhere around fine leg. It's not a bad over this. Apart from that maximum, he's kept them quiet. 3 singles, a dot ball. 1 left in the innings. He, Sohail Khan, and Mir Hamza together. We've got a partnership of 15. Mir Hamza, can he put one away? We'll toss again. Going to come back for the second one, at least attempt. Lowest first inning total this season of National T20, 142 for 7 Sindh. Can they defend that? We'll have to wait for the next 20 overs, but it's a bit of a seesaw. I mentioned earlier, great power play, then nose diving, then recovered a little bit, and again in the last 5 they couldn't really accelerate. And Balochistan did well. In the last 5 overs, they only conceded 38 runs. And that's some redemption from them. They bowled really well. Fast ball is delivered. But they were expected of Sindh. Well, they have to bowl really well and field. There's the story confirmation. Nothing from the top order. Saud Shakil gone on 18. Saad Khan, at time it looked he was in control. Gone on 31. Sarfaraz on 29. The rest was just bits and pieces. Mir Hamza at the end couldn't really get going. And they managed to put a total of 142. Bowling has been pretty decent. Junaid Khan back in the attack. Khurram Shahzad grabbing 2. 2 for Yasir Shah as well as Kashif Patti, and death overs were spot on from them. They managed to restrict Sindh, scoring a big total.
Well, we'll talk to Junaid Khan. He's with us now. Junaid, आपका कमबैक हुआ, थोड़ा बताएं कि इस अरसे में किन चीज़ों पे आपने ज़्यादा काम किया? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ही खेल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो था वो खेला था 4 डे क्रिकेट। उसके बाद मैं इंग्लैंड में क्रिकेट खेलता रहा, लेकिन पाकिस्तान वगैरह में क्रिकेट नहीं खेले। सो ये था कि आप वहाँ पे चाहे जितना भी क्रिकेट खेलो, लेकिन वेदर का भी डिफरेंस है। फिर जब आप यहाँ पे आते हो तो क्रिकेट भी डिफरेंस थी। सो ये था 2-4 दिन जो है वो मुश्किल ही लग रहे थे, लेकिन जैसे पहला ओवर किया और पहला बॉल जब अच्छा हुआ तो वो फीलिंग नहीं थी, एक मोमेंटम बना था। सो उस हिसाब से जो है वो अच्छा कर रहा था। आपका रिदम अच्छा लग रहा था, बॉलिंग बहुत अच्छी आपने की। कितना मुश्किल हो जाता है कि इतने लंबे अरसे के बाद आके सीधा मैच में परफॉर्म करना? इसमें ये था, थोड़ा सा रिदम में ये था कि 2 नो बॉल हुए। हालांकि मुझे थोड़ी सी टेंशन थी, क्योंकि जब आप इतने लॉन्ग अरसे के बाद खेलते हो तो वाइड और एक्स्ट्रा का होता है, फिर लेंथ का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बस 2 नो बॉल हुए। कोशिश करूँगा कि इसी को कंट्रोल कर सकूँ। और ये टोटल आपको लगता है आप आसानी चेस कर पाएंगे? सॉरी, टोटल आपको लगता है आसानी चेस कर पाएंगे? यार ये क्रिकेट है, इसमें कुछ पता नहीं चलता, अप डाउन होते रहते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे, अगर पावर प्ले में पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे और विकेट नहीं गिरेंगे तो इंशाल्लाह चेस करेंगे। चलें, थैंक यू सो मच, वेल बोल्ड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Sindh elected to bat first after winning the toss, and it was all on Sharjeel and Saim. Sharjeel Khan, at a moment it looked like he looked $1 million, but this was the first drop. He got another life. This was Kashif Bhatti, probably a little bit late. Really, Saim couldn't continue his good form. Just tipped it straight to Yasir Shah. And followed was a brilliant delivery, taking Sharjeel out. So Shakil came in and he looked like he's in a good form. It was a big over for them. 3 boundaries of Junaid Khan. So Shakil and really managed to flick someone's in. Looked like a really good surface. Managed to capitalize on the loose deliveries. It looked like Sindh gained some momentum. Poor lines from Balochistan bowlers as well. Ahmad in particular did struggle to pitch it in the right areas. This was the biggest blow. A very soft dismissal. Yasir Shah, he made the difference. Again, some momentum was there for Sindh. Zafar Ahmed, and this one was a clear one. No problems there. Catch it. Yeah, these two sides have been equally good and equally bad at various stages of the game. Couldn't really pick out one saying that they've completely capitalized, but spin has been good. Especially Yasir Shah leading the way and not really allowed. Every time we saw Sindh gaining the momentum, they lose a wicket. And there's been some good bowling, some really ordinary fielding from Balochistan. And they've managed to get those. Look at that. As the catches were being dropped, absolutely unbelievable. Some were taken by a couple of senior members, R.S. Sohail on that occasion, dismissing Anwar Ali. Sohail Khan smashing one down to mid-wicket. You would have loved the sound of it. 142 for 7 in 20 from Sindh after winning the toss and batting first. So it's crystal clear. 7.15 runs and over, get 143 and show us you can chase and win here on this ground as well. We'll take a break and we'll come back.
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर बलूचिस्तान और सिंध इस वक्त आमने सामने हैं किंगडम वैली नेशनल T20 कप में। और आज सिंध की टीम ने टॉस जीता और उसके बाद उनको बड़ा स्कोर बनाने में कामयाबी नहीं मिल सकी। 142 रन बनाए सऊद शकील एंड कंपनी ने। साइम अयूब और शर्जील जल्दी आउट हो गए थे। शर्जील ने छोड़े हुए कैचेस का भी फायदा नहीं उठाया। साद ने 31 रन बनाए, सरफराज अहमद 29 रन बना सके। खातिर खां मुजाहमत इनकी जानिब से आज देखने को नहीं मिल सकी है। जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, जुनैद खान ने अच्छी इब्तिदा की और खुर्रम शहजाद ने भी अच्छा स्पेल किया। खासतौर पर पहला वो गेंद को स्विंग करने में कामयाब हुए और बाद में यासिर शाह और काशिफ भट्टी ने अपने तजुर्बे की बदौलत बिल्कुल सर उठाने का मौका नहीं दिया मुखालिफ खिलाड़ियों को। यही वजह है कि ये मैच जीतने के लिए बलूचिस्तान अब फेवरेट है, जिसके अंपायर हैं इम्तियाज़ इकबाल और मोहम्मद आसिफ। तो अच्छा मौसम है, अच्छी पिच है रावलपिंडी स्टेडियम में बैटिंग के लिए। इससे बेहतर हालात हो नहीं सकते जब हद नज़र तकरीबन 16 किलोमीटर हो तो आपकी गेंद भी ज़्यादा बेहतर नज़र आने लगती है। अली यूनुस मेरे हमरा हैं। जी अली कहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पिचेस बहुत शानदार तरीके से तैयार की गई हैं और आज का पिच भी स्पेशली जिसमें बहुत अच्छा बाउंस और कैरी है। और मुझे डेफिनेट लगता है कि सिंध मिस आउट किया है, एक बड़ा स्कोर करने के लिए अवेलेबल था। डिसअपॉइंटमेंट रही होगी शर्जील खान को, उनकी तरह का पिच मुझे लगता था कि जहाँ पे उनको बैटिंग करना पसंद होगा, लेकिन शायद थोड़ा जल्दी कर बैठे और ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाए सिंध की साइड। ऑल दो मौके काफ़ी मिले उनको, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए सिंध की साइड। जी हाँ, क्योंकि आज शर्जील जल्दी आउट हो गए और मिडल ऑर्डर जो है उसका भी रद्द अमल ज़्यादा बेहतर सामने आया नहीं। इसलिए ये जो आशियाना है ना, ये थोड़ी सी एक नाजुक सी शाख पे बना है। सिंध के जो बॉलर्स हैं, सवाल ये है कि क्या जब पहले दिन उन्होंने 147 रन डिफेंड कर लिए थे, 142 का दिफा करने की उनमें सलाहियत है। जी हाँ, हसीबुल्लाह 3 मैचेस में 34 रन बना चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंप्रेसिव यंग प्लेयर हैं, बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंटेड है। उनके साथ एक वेटरन असद शफीक ने ज्वाइन किया, 36 साल उम्र है, बहुत तजुर्बा है, 1150 बना चुके हैं, 92 उनका हाईएस्ट है, 2294 रन उनके करियर में। यहाँ पे एक चीज़ जो सिंध की फेवर में तारिक भाई जाती है वो कि इस मैच में एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ खेले हैं। इब्रार को टीम में वापस लेके आए हैं उमैर बिन यूसुफ की जगह, वो उनकी फेवर में ज़रूर जाएगा। सोहेल खान बॉलिंग का आगाज़ करेंगे, 142 विकेट्स, 3 बार 4 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। बेस्ट 5 खिलाड़ी आउट किए हैं 23 रन देकर। बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है, एक ऐसे बॉलर हैं जिनको बैटर को आउट करना आता है, सेटअप करके आउट करते हैं, विकेट्स लेनी आती हैं इनको। तो ये जो अर्ली स्पेल है तारिक भाई, जो पहले 6 ओवर हैं, ये इस मैच का डिसाइडर पॉइंट होंगे। यहाँ सोहेल खान एक आदत सी है इनको नई गेंद पर विकेटें लेने की, गेंद को स्विंग कराने की अहलियत रखते हैं। आखिरी मौके पर इस टीम में शामिल हुए थे। रुमान रईस जब जख्मी हो गए तो उनकी जगह पर इनको बुलाया गया कराची से रावलपिंडी। और पहली गेंद हवा में गई लेकिन गैप में चली और 4 रन खुश नसीबी के मिल गए। खासा दूर से शॉट अटेम्प्ट किया हसीबुल्लाह खान ने, इसी के जरिए बलूचिस्तान की टीम ऑफ द मार्क हुई। ये आगे पिच किया हुआ बॉल था लेकिन लाइन खराब थी, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। स्विंग हासिल करने की कोशिश की लेकिन लाइन सही नहीं थी। और हम जानते हैं कि हसीबुल्लाह की जो इंटेंट है वो हमेशा रन्स की तलाश में रहते हैं, बहुत ही पॉजिटिव यंग बैटर हैं। कोई भी डिलीवरी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आगे पिच हुआ होगा तो ये नहीं छोड़ने वाले हैं। सोहेल खान ने अभी भी हर्डमन का इलाका खाली छोड़ा हुआ है। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक पासी को उन्होंने रखा है और लेग साइड में खेल दिया हवा में और फील्डर ये कैच गिरा गए। ये 5वां कैच है आज के दिन जो कि नहीं लिया जा सकता और इस बार कसूरवार हैं मीर हमजा। खासा वक्त उनको मिल गया था। ये अच्छा फ्लिक शॉट था, टाइम थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया है शायद। और मीर हमजा ने बहुत स्लो रिएक्ट किया, बहुत वेट करते रहे कि शायद बॉल उनके पास आएगा, लेकिन उसमें ही देर कर बैठे
और तारिक भाई, हमने इतनी तारीफ की कि पहले 3 दिन इतना शानदार टूर्नामेंट रहा है ये फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आज ये पहले मैच में शायद ये तीसरा ड्रॉप कैच है जो हमें देखने को मिल रहा है। ये अच्छी क्रिकेट नहीं है, क्योंकि अगर आपको अर्ली विकेट चाहिए तो आपको चांसेस लेने होंगे। अच्छी फील्डिंग शफीक, खासे तेज कदम है। अबरार अहमद फील्डर जो कि नए आए हैं सिंध की टीम में, अपना पहला मैच खेल रहे हैं इस सीज़न में। इस एतबार से नए हैं कि इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रहे हैं। हालांकि इससे पहले PSL खेल चुके हैं। वाइट बॉल का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी तजुर्बा है अबरार अहमद को। दाएं हाथ से मिस्ट्री स्पिन करते हैं, हो सकता है कि नई गेंद इनसे कराई जाए लेफ्ट हैंडर के सामने। ओह, अच्छा शॉट, दिलकश, बड़ी उम्दा फॉर्म में हैं और उसी को कैच करा रहे हैं हसीबुल्लाह खान। सुहेल ने गेंद को स्विंग कराने की कोशिश की, लेकिन ये पाले में चली आई लेफ्ट हैंडर के। जहाँ आगे पिच किया हुआ बॉल था, जैसे आपने कहा, स्विंग हासिल करने की कोशिश, लेकिन जितनी अच्छी फॉर्म में हसीबुल्लाह हैं, जितने टैलेंटेड वो हैं, जितने स्किलफुल वो हैं, ऐसे बॉल को वो नहीं छोड़ने वाले हैं। वो दिखाते हुए कि क्यों वो इतने उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है। हसीबुल्लाह की बहुत हाईली रेट किए जाते हैं इन्हीं शॉट्स की वजह से। एक बार फिर इन खासी देर तक हवा में रही, लेकिन डीप गली पर जाहिद महमूद से पहले आगिरी बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं हसीबुल्लाह खान। और उसकी वजह एक ये भी है कि जारहाना लेंथ अपनाई हुई है, विकेटें लेने के सिवा चारा लगता नहीं है। सुहेल खान कोशिश कर रहे हैं विकेट लेने की, और उसी में फिर रन्स का भी इम्कान रहेगा। यहाँ पे यंग हसीबुल्लाह को थोड़ा ख्याल भी करना होगा, कैरिड अवे नहीं होना है। अच्छा आगाज़ मिल गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि सुहेल खान एक बहुत एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है। तो अगर आप कैरिड अवे को रैश शॉट मार के अपनी विकेट गवा देंगे, वो अच्छा नहीं होगा। और शॉट लाजवाब, फील्डर गेंद के पीछे पीछे हैं और इसका अच्छा ताकुब किया दानिश अजीज ने, बाउंड्री बचाई और सिर्फ 2 रन तक ही महदूद कर दिया। ऑल द वे इस गेंद के ताकुब में रहे दानिश। अच्छी आउट क्रिकेट उनकी जानिब से। अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल किया था शफीक ने, और उतनी ही शानदार फील्डिंग, ये अच्छी कमिटमेंट है। लेकिन एक चीज़ जो हैरान कुन रही कि रनिंग बिटवीन द विकेट, शायद ये 3 रन बन सकते थे अगर थोड़ा तेज़ भागा जाता। पहले ओवर का इख्तिताम हुआ 13 बगैर किसी नुकसान के बलोचिस्तान। स्विंग अवेलेबल है और शायद इसी वजह से मीर हमजा को लाया गया है। लेकिन आइडिया जैसे आपने कहा वो सही था, अबरार से भी करवा सकते थे, एक एक्स फैक्टर ज़रूर है। लेकिन जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे कैरी अच्छा है, बाउंस अच्छा है, स्विंग भी हासिल हो रही है, तो अपने सबसे बेहतरीन बॉलर, स्विंग बॉलर को ही लेके आए हैं सऊद शकील। मीर हमजा 29 साल की उम्र, 45 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। आजकल बहुत चर्चा है इनका पाकिस्तान टीम के लिए भी, मीर हमजा का, और परफॉर्मेंस उनकी ऐसी है कि आप कंसिडर हो सकते हैं। बहुत मेहनत की है इन्होंने अपनी फिटनेस पर, और वाइट बॉल क्रिकेट में भी इन दिनों कामयाबियां समेट रहे हैं। नई गेंद को स्विंग करते हैं और डेथ ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मीर हमजा। क्योंकि इतनी ज़्यादा रफ्तार नहीं है, लेकिन नई गेंद पर 1-2 ओवर्स होते हैं जहां पर आप गेंद को मूव करा सकें। 2 विकेटें हासिल की थी नॉर्दर्न के खिलाफ शुरू ही में, बाद में सुहेल तनवीर को बोल्ड किया। और दोनों जो सबसे ख़तरनाक बैट्समैन थे अली इमरान और हसन नवाज, उनको आउट किया था।
इन्होंने उस मुकाबले में। जी हाँ, तजुर्बे की तो कोई कमी नहीं है, विकेट्स लेने आती हैं इनको। यहाँ पे जो एक चीज़ अब यहाँ पे बैलेंस ढूंढना होगा सिंध की साइड को, क्योंकि स्विंग हासिल करने अगर जाएंगे तो बॉल आगे पिच करना होगा, तभी इफेक्टिव होगा, और आगे पिच करेंगे तो रन्स भी आएंगे। जैसा हमने पहले ओवर में देखा, जिस तरीके से हसीबुल्लाह ने बैटिंग की, सोहेल खान मुसलसल कोशिश करते रहे स्विंग ढूंढने की, लेकिन बॉल थोड़ा मुंह में करते रहे, हाफ वॉली बनती रही हसीबुल्लाह के लिए। और ज़्यादा जब पेस आपकी इतनी नहीं होती है तो फिर मुश्किलात डेफिनेटली बॉलर्स के लिए होती हैं, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्विंग हो रहा हो तो फिर डिफरेंट होती है सिचुएशन, लेकिन जहाँ लिमिटेड स्विंग अवेलेबल होगा वहाँ पे आपकी पेस बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि पेस की कमी ज़रूर हमें सोहेल खान में नज़र आई। और आप देख सकते हैं कि अब मीर हमजा थोड़ा लेंथ बॉलिंग की तरफ आ गए हैं, आगे पिच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्कोर इतना ज़्यादा नहीं, टारगेट सिर्फ 143 रन का है। तो आप अगर आगे पिच करने जाएंगे उसमें रन्स होंगे, लेंथ बॉलिंग करेंगे तो उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। तो ये बैलेंस ढूंढना होगा सिंध के बॉलर्स को। सऊद शकील पे भी ज़्यादा दबाव है, क्योंकि पिच में भी मदद मौजूद नहीं। गेंद आगे गिराई और इस बार फिर मुंह की खाना पड़ी। असद शफीक ने इसे फुल फेस ऑफ द बैट के साथ खेल दिया। प्लेसमेंट उनकी आला थी, पहला चौका लगाया असद शफीक ने, उनका दिलकश ऑफ ड्राइव। जी हाँ, फिर स्विंग की तलाश, फिर आगे पिच हुआ बॉल, थोड़ा ज़्यादा आगे पिच हो रहा है, शायद इतनी एग्जैजरेटेड मूवमेंट नहीं है कि आप इतनी आगे बॉल करें। और ऐसे प्लेयर, असद शफीक का एक्सपीरियंस और हसीबुल्लाह का यूथ, मुश्किलात हैं यहाँ पे सिंध के लिए। और अच्छा शॉट, लेकिन उम्दा फील्डिंग अनवर अली की। ये दर्दनाक जरूर है, लेकिन इसमें खुशी भी होती है कि आपने बाउंड्री बचाई है। कमिटमेंट लेवल शानदार है, क्योंकि ऐसी ही फील्डिंग की एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं अगर आपको ये छोटा टोटल डिफेंड करना है सिंध को। और यहाँ पे काफ़ी तकलीफ में नज़र आ रहे हैं हमें अनवर अली। काफ़ी वैसे तो स्ट्रॉन्ग मैन है, लेकिन हम जानते हैं कि जब इस ऐसे पॉइंट पे बॉल लगे जहाँ पे कलाई के ऊपर, ये काफ़ी दर्दमंद हो सकता है। फहीम अशरफ 2 दिन पहले ऐसे जख्मी होकर गए थे, उनको मैदान छोड़ना पड़ेगा। सिंध और बलोचिस्तान का मैच मुल्तान में हुआ था पाकिस्तान कप में, अब चंद माह पहले, जहां सिंध को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बलोचिस्तान की जो क्रिकेट है, ये पिछले एक काया पलट हुई है इस बलोचिस्तान की टीम में। हालांकि पिछले सीज़न के शुरू में इन्हें बड़ी मुश्किलात थी, टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल भी शायद वैसा नहीं था। और यहाँ पर मुश्ताक अहमद ने इस साल टीम को ज्वाइन किया, आशान मसूद भी जहाँ जाते हैं ज़ाहिर माहौल वैसे ही अच्छा हो जाता है। और इस वक्त ये टीम जो है वो कामयाबियों के सफ़र पर फिर से ये रवाना हो रही है। पाकिस्तान कप जब इन्होंने जीता था तो इन्होंने अपनी अहलियत तो उसी वक्त जाहिर कर दी थी। टीम में बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी है और इस वक्त एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे आपने जिक्र किया कि मुश्ताक अहमद से आने से इनकी टीम का माहौल बहुत बेहतर हो गया होगा। हम जानते हैं कि वो ऐसे कोच हैं जिनसे बात करना बहुत आसान है, इस तरह के वो कोच हैं। और जब आप किसी भी प्लेयर का किसी कोच के साथ वो कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाता है तो बहुत इजीली मैनेज हो जाते हैं। दोनों कप्तान भी लेग स्पिनर हैं, तो एक दूसरे को समझते अच्छे तरीके से होंगे। हवा में खेला, ऐसे लेट कट किया, दानिस्ता शॉट था ये हसीबुल्लाह खान का। 4 रन्स उनको मिल गए। पिछले मैचेस में हमने देखा था असद शफीक लीड रोल प्ले करते थे इस ओपनिंग पार्टनरशिप में। आज ये जिम्मेदारी हसीबुल्लाह ने अपने सर ली है। जी हाँ, बहुत ही ख़राब लाइन, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। आप बॉल करेंगे तो हल्का सा एज भी लगेगा तो थर्ड मैन ऊपर है, 4 रन आसानी से मिल जाएंगे।
ये ख़राब बॉलिंग है, ख़राब आगाज़ सिंध की जानिब से। 2 ओवर में 23 बगैर किसी नुकसान के। मुश्ताक अहमद मसलसल बातें करते हुए शान मसूद के साथ। आई एम श्योर बहुत हेल्प हासिल होगी यहाँ पे शान मसूद को भी। मुश्ताक अहमद का वो इतना एक्सपीरियंस है सारा ट्रांसफ़र करते हुए इन यंग प्लेयर्स के अंदर, वो जो टैक्टिकल मूव्स होती हैं उसमें बहुत शानदार है मुश्ताक अहमद। यार वहाँ राजहंस को भी हम देख सकते हैं, इनका भी बड़ा किरदार है इस टीम को वापस यकजा करने में। फील्ड में यहाँ पर तब्दीली की गई है। उमर बिन यूसुफ आए हैं, अनवर अली मैदान से बाहर चले गए हैं। ये अच्छी क्रिकेट है। आसिफ शफीर रियलाइज करते हुए कि शर्जील खान इतने तेज़ नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट हैंड से खेले थे, करीब था बॉल शर्जील खान के, लेकिन इतना स्विफ्ट मूवर नहीं है तो आसानी से एक रन हासिल कर लिया। एक और बात जो सिंध की फेवर में नहीं जा रही है, वो अनवर अली अब बाहर चले गए हैं। वो भी एक ऐसे बॉलर हैं जो स्विंग करना जानते हैं, उनकी कमी भी डेफिनेटली महसूस होगी। आई होप कि वो वापस आ जाएं। या अब सोच तब्दील कर ली है और डीप पॉइंट से फील्डर को साद खान को वो लाया गया है। कवर पॉइंट पर थर्ड मैन को पीछे हटा लिया गया क्योंकि उस तरफ बहुत रन आज बना लिए हैं हसीबुल्लाह ने पहले ही। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जहां आज चौथा दिन है इस किंगडम वैली नेशनल T20 कप का। बड़ी अच्छी क्रिकेट हमने देखी है पिछले 4 दिन में। नौजवान खिलाड़ी उभर के सामने आए हैं। कल शाहरून ने मैन ऑफ द मैच का एजाज हासिल किया, जो साधन पंजाब पहली कामयाबी का बायस बने। और ऐसे उठाकर खेले, ये कमजोर शॉट है और गेंद पहुंच गई सीधी कप्तान सऊद के हाथों में। और पहली विकेट जिसकी अशद जरूरत थी सिंध को, वो सोहेल खान ने अपने नाम लिख ली। जी हाँ, इसी चीज़ का जिक्र मैं आखिरी ओवर में कह रहा था कि कैरिड अवे नहीं होना है, और ऐसा ही हुआ। सोहेल खान इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं, इस बार बॉडी के अंदर बॉल किया और गलत शॉट को सिलेक्ट किया। शायद वो जो एक्साइटमेंट थी कि रन आ रहे हैं, बल्ले में बॉल अच्छा लग रहा है, यही ऐसी चीज़ें हैं जो हसीबुल्लाह को सीखनी है, बहुत जल्दी सीखनी होंगी। 15 रन बना सके 24 पर 1 बलोचिस्तान। मुसलसल दूसरे साल T20s में बलोचिस्तान की नियाबत कर रहे हैं अब्दुल वाहिद बंगल ज़ई। 18 मैचेस में 351 रन बनाए हुए हैं। औसत दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। स्ट्राइक रेट पहले ही इनका बेहतर हुआ है, 58 बेहतरीन स्कोर। क्या इनका शुमार भी ऐसे यंग बैटर्स में होता है जो टेक्निकली बड़े करेक्ट हैं। बहुत होप हो गई है बलोचिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए। अब्दुल वाहिद बंगल ज़ई और हसीबुल्लाह। अच्छा शॉट लेकिन बगैर किसी रन के। यहाँ रन्स बहुत ज़्यादा नहीं है और इसके बावजूद स्ट्रोक्स के लिए जा रहे थे हसीबुल्लाह। रुकाई दे बैठे, यही जिक्र हो रहा था कि बहुत ज़्यादा शॉट्स खेल रहे हैं। कई बार आपको रिस्पेक्ट पे करना पड़ती है एक सीनियर बॉलर जब आपके सामने बॉलिंग कर रहा हो, वो विकेट टेकर हो, जो कि सोहेल खान है।
अपना पहला रन बड़ी तेज़ी के साथ बनाया मंगल जई ने। तो इस बात का भी जिक्र हो जाए अली कि इस वक्त 6.87 की औसत दरकार है। तो जो आपके खेलने का अंदाज होता है कि आपने पहले 6 ओवर्स में 50 रन बनाना है T20 में, और उसके बाद जो अगले 14-15 ओवर का मरहला होता है वहाँ पे आपको 7 से 8 की औसत जो है वो बरकरार रखना होती है। अब जबकि ज़्यादा रन्स नहीं हैं बोर्ड पर, तो क्या इन्हें स्कोर बोर्ड को देखकर बैटिंग करनी चाहिए, या जो एक इनका पैटर्न है T20 का, ये अपने जो कदम है ये उसी को फॉलो करते रहें, उस पैटर्न को? देखिए, जितनी लंबी बैटिंग लाइन बलूचिस्तान की है, ये अफोर्ड कर सकते हैं कि ऊपर से एक फ्लायर उनको मिल जाए। इस बॉल के बाद बात जारी रखेंगे। अंपायर पर नजर रखना होगी, लेकिन सिर्फ ओवर देने पर इक्तिफा किया, जिसके मानिए कि बल्ला लगा था असद शफीक का 26 पर 1। ये पाकिस्तान की जो नेक्स्ट 11 है, ये उसकी तश्कील के लिए PJL को मुतारिफ कराया जा रहा है। अक्टूबर में आप ये टूर्नामेंट देख सकेंगे पाकिस्तान टेलीविज़न पर बराह रास्त लाहौर के सपोर्ट की गई है। PJL के पहले सीज़न की मेज़बानी, जिसमें दुनिया के 18 ममालिक से 144 क्रिकेटर्स जो हैं अभी तक उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और ये दरअसल एक मुस्तकबिल की सोच को सामने रखते हुए ये तस्वुर पेश किया गया है। और वो जो कहते हैं ना कि नाइस आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, यही मुश्किल होता है। और यहाँ मुश्किल रन लेना चाहते थे, बाल बचे। तो ये अच्छी सोच है कि अब क्रिकेट का खेल जिस तरफ जा रहा है, हम सब समझ सकते हैं कि मुस्तकबिल में कौन सा फॉर्मेट खेला जाएगा, और उसी के लिए पेशबीनी की गई है। ये यंगस्टर्स को सामने लाने का और उनकी डेवलपमेंट का जल्दी एक मौका होगा पाकिस्तान क्रिकेट के पास। ये जल्दी करनी होगी। प्रेशर डाला था फील्डर पे, अच्छे तरीके से रन हासिल किया यहाँ पे बंगल सही ने, लेकिन मारते ही भागे थे। रियलाइज किया कि रन अवेलेबल है, प्रेशर डाला यहाँ पे साद खान पे, और उसी असना में फंबल भी करा लिया। से उठाकर खेले, लेकिन ये सही तरह शॉट जो है मुकम्मल कर नहीं सके। 4 रन फिर भी मिल जाएंगे असद शफीक को। ये कल भी स्पिनर के खिलाफ इसी तरह शॉट खेलते हुए आउट हुए थे, लेकिन इस बार बाउंड्री मिल गई। जहाँ अच्छा कदमों का इस्तेमाल था, लेकिन टाइम उस तरीके से नहीं कर पाए, ना ही प्लेस कर पाए जहाँ खेलना चाह रहे थे। लेकिन बल्ला जोर से घुमाया था तो बॉल ऊपर से पॉइंट के फील्डर से चला गया। 4 रन के लिए डोमिनेट करना चाह रहे हैं इब्रार को, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है। इब्रार का अगर बॉल गिरना शुरू हो जाए तो मुश्किलात ज़रूर पैदा करते हैं, इसीलिए जितनी जल्दी उनको अटैक किया जाए, लाइन ख़राब की जाए, उतना ही बेहतर है। पाकिस्तान जूनियर लीग का आप जिक्र कर रहे थे, तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। वो जो कमियां हमारे यंगस्टर्स के अंदर, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को मीटअप नहीं हो रहे थे, वो आई एम 100% श्योर कि पाकिस्तान जूनियर लीग से वो कमियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट की टेक्निक्स, उसकी अप्रोच, ये सब डिफरेंट है। आप जितनी जल्दी उसको अडेप्ट करेंगे उतने ही सक्सेसफुल होंगे आप इंटरनेशनल लेवल पे। तो आई थिंक ये एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है और बहुत ही शानदार काविश है ये PCB की जानिब से। हम सब जानते हैं कि जो चेयरमैन रमीज़ राजा हैं, उनके करीब है ये बहुत।
ये अच्छा खेला इस बार विद द स्पिन मंगल जई ने। 4 ओवर्स के बाद 33 पर 1। यहाँ ये इनिशिएटिव, ये ख्याल जो है पाथवे क्रिकेट का, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जनाब रमीज़ राजा का है और इसको अमली जामा पहनाने की इन दिनों बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। नए बाबर आजम, नए शाहीन आफरीदी हम देखेंगे और बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ आप कराची और लाहौर में भी एक्शन में देख सकेंगे। 20 सितंबर से पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ शुरू हो रही है। 17 बरस के बाद इंग्लिश टीम पाकिस्तान पहुंच रही है। यहाँ ये बहुत शानदार दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि जब बड़ी साइड्स पाकिस्तान आएंगी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे लोगों को, स्टार्स को अपने सामने देखने के। ये बहुत इंतज़ार किया है फैंस ने बड़ी टीम्स का, हमारे मैदानों ने बहुत इंतज़ार किया कि बड़े प्लेयर्स यहाँ आके खेलें, और ये सारा क्रेडिट PCB को जाता है। जिस तरीके से इन्होंने सारा प्लान किया है, इंग्लैंड टीम को मनाया है कि वो पाकिस्तान का टूर करें, आई थिंक ये बहुत ही शानदार काविश है। यहाँ 1 साल पहले इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पाकिस्तान आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो सिफारती कोशिशें थीं वो रंग लाई पाकिस्तान क्रिकेट की। और ये बहुत बड़ा सीज़न है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही कामयाब दौरा करके जा चुकी है पाकिस्तान का, और अब इंग्लैंड की टीम 2 मरहलों में आएगी। पहले T20 मैचेस खेले जाएंगे कराची और लाहौर में, बाद में 3 टेस्ट मैचेस होंगे। रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा इस साल दिसंबर में। फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें औलिया के शहर मुल्तान जाएंगी और वहाँ दूसरे टेस्ट मैच के बाद आखिरी टेस्ट मैच कराची में होगा। वापस आते हैं लाइव मैच की जानिब। 34 रन बना लिए हैं बलोचिस्तान ने। यहाँ पे बंगल से ही बहुत सॉलिड लग रहे हैं, उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं असद। और लेग स्टंप के बाहर गिरी थी गेंद। शायद हाइट का भी मसला था और अंपायर बतला रहे हैं कि लेग स्टंप के बाहर भी गिरी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा फील हुआ पहले इंप्रेशन से कि लेग स्टंप के बाहर बॉल किया है। करीबी मामला ज़रूर था, लेकिन हाइट ज़रूर डेफिनेटली मिस कर रही होगी। पिच हम शायद यहाँ से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हाइट डेफिनेटली सही इशारा मोहम्मद आसिफ की जानिब से। यहाँ रावलपिंडी में ज़्यादातर जो विकेटें बॉलर लेते हैं कैच आउट होते हैं। आज वो के ज़्यादा कैचेस पकड़े नहीं गए, लेकिन जो मोड ऑफ डिसमिसल है पिंडी स्टेडियम से मंसूब समझा जाता है, वो यहाँ हाई कैचेस, स्लिप कैचेस लिए जाते हैं। LBW बोल्ड ये कम देखने को मिलता है यहाँ के बाउंस की वजह से उठाकर खेला। फिर कैच का मौका है, तो कोशिश जरूर की थी साद खान ने, लेकिन गेंद उनसे पहले गिर गई और दूर भी। ये कमाल का एफर्ट किया है साद खान ने, बॉल काफी दूर था उनसे, और यही आपको चाहिए अपने यंगस्टर से, कोशिश। और उसी तरीके से देखिए टाइम से उस तरीके से टाइम नहीं कर पाए, फील्डर मौजूद थे। ओह, ये शानदार एफर्ट है, बहुत ही कमाल का एफर्ट। इस पे इनका कसूर नहीं बनता है। 4 रन हासिल किए। ये उस सोच की अक्कासी करती है कि रन्स कम है तो इससे आपको रन्स बचाने से ज़्यादा विकेट लेने की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा चारा भी नहीं है। इसीलिए शायद वो कैच के अटेम्प्ट में गए थे, क्योंकि विकेट, जैसे आपने कहा, विकेट चाहिए, और यही आइडिया था उनका। डाइव भी की उन्होंने। अब एक फील्डर जो है मिड विकेट पे ले लिया है, 3rd फील्डर आ गया है सर्कल के अंदर। इस बार रफ्तार में रद्दोबदल किया, अच्छा खेला और उसके बाद अच्छी दौड़ भी लगाई। इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल गई है। बंगल जई की पहले मैच में जिस तरह से मिस सेंचुरी बनाई थी, बिल्कुल मुख्तलिफ बैट्समैन लगते हैं, शॉट खेलने से नहीं घबराते, रनिंग अग्रेसिव हो गई है। क्योंकि वो जो लगता था पहले 1-2 सीजन में, जो घबराहट थी, एक्सपोजर की कमी थी, वो दिन ब दिन अब दूर होती जा रही है। बंगल जई ये एक ऐसा टैलेंट है। आज मुश्ताक अहमद से भी बात हो रही थी
उनका भी ये ख्याल है कि बंगल जई और जो हसीबुल्ला हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट के मटेरियल हैं। ये और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है और दाद देनी होगी मुश्ताक अहमद को, क्योंकि वो इस ऐसी पोजीशंस पे उनको खिला रहे हैं कि जहां पे वो सीनियर्स के साथ खेल रहे हैं और उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 5 ओवर्स के बाद 39 पर 1 बलूचिस्तान। Seems like a regular business for Balochistan. Nothing much to worry about. Got ample batting left. Sindh, on the other hand, what a formidable bowling lineup. All to continue. No, yes, my God. They've been bowling well, but the only problem is some half chances missing out that might have provided some breakthrough in terms of giving some nervousness to Balochistan. Good to see Brar back. I've got Faisal along me. Good to see Brar looking pretty sharp in the training just before the start of the game, and Sindh needs his best efforts because they didn't do justice with themselves where they batted. A couple of sweepers on the onside and a ring of fielders on the offside, throwing the challenge to the batters to go through or over the offside. Oh, down the track, and oh, what a catch! We've been talking about the fielding effort, but this was exceptional. Saad Khan, a perfectly timed jump, did the work for him. The challenge was there, the invitation was there, a beautiful piece of bowling from Abrar, the flighted delivery, tempting Asad Shafiq to go over the top. And have a look at that. Saad Khan, who's been a live wire in the field, needed that kind of inspiration after a couple of early drops, but Asad Shafiq will depart for 17. Balochistan 40 for 2. John Masood now comes into the middle. Bangals are already there. He has a great role to play in this chase. Senior pro Shafiq was dismissed earlier. He threw the stump mics. Safraz really helping Saud Shakil with what right field can be for Shan Masood, who's in form. And this is an understatement. He's piled on the runs in all formats. 28, 43 runs in 111 games. 27 the average, and a very healthy strike rate as well. Had a rare failure in the previous game. We will be looking to put it straight and make a winning contribution to his side's efforts today. Sindh have got a sniff now. That's the wicket, Abrar. You expect him to take wickets. Wasn't a good delivery, but it's trying to go over the infield, trying to exploit the fielding. That's a brilliant catch. You have to be very aware of when you judge. You couldn't believe it. Yourself, mate. Good bowling, really good bowling. Finding the playing 11, strengthening the spin department further, Saud Shakil. Got plenty of options. You talk about, they've got Zahid, Danish can bowl as well, but Abrar, that's the key. Game changer, if I say. Oh, that's trouble, and another half-shan gone begging.
A little stutter. You normally don't see this with Shan. He just looked up and Bangalzai wasn't responding. Have a quick look. That stutter and Bangalzai had to bring out the dive, but the fielder couldn't pick up the ball. That is good hustle there. Putting pressure. Fielders in the ring have to be tight in there because Sindh doesn't have a lot of runs to play with. Yeah, the need to keep Shan Masood, keep denying those singles. That can add a lot of pressure on them. Yes, It's really well bowled from Ibrar. Dot to end the over. 6 overs gone. Balochistan 41 for 2. Power play done and dusted. Balochistan 2 down, but they will feel that they're well ahead of runs. Another spinner now, Zahid Mahmood. I think they've changed it. Power play has been mix and match. Tibula started really well. It looked like might go and score big. This was a first chance. Could have been taken though. But he came in and displayed his shots. Shafiq on the other hand, he's never out of touch. This one, tried to scoop it in the air. Couldn't really clear the infield. And this was a brilliant catch. 2 blows, Balochistan. For a moment, I think Saud and Sarfraz was thinking about bringing on Zahid Mahmood. Now they've decided to give it to Anwar Ali. Third seamer in this attack. 151 wickets in this format. Average slightly on the higher side. So is the economy. Best of 4 for 30. Yes, Mike. Keeping wicket to wicket, that should be the case. Got long on, long off. Third man's back to his cover and deep square leg. Probably they would have changed it because got Shan and the left-hander against the leg spinner. At times it can be very easy for him, especially the form he's carrying. That's good fielding. They need that. Then not a big total, but these efforts can apply some pressure. And look at that, skipper Saud Shakil from covers and Sarfraz from behind the stumps, quickly rushing up to Danish Aziz. They realize they're in the middle of the battle, need to save each and every run to put pressure on this Balochistan batting lineup, who may have nightmares about what happened to them yesterday. Slightly modest total, they were well on their way, spectacularly lost their way. Oh, that's a quick single. I think mid-off should have been attacking that. Yeah, there's no one else to blame apart from Balochistan. The batters really looked like they had no plan. And what's we've usually seen with low totals, what do you think goes wrong in chasing? Sometimes that puts a doubt in your mind. Do you want to go hard from the beginning, or you just want to just play in your flow and then see where you end up, which can be tricky. That middle of the road totals are very tricky at times. 3 sweepers on the onside. That mindset really puts the chasing team in a mix sometime because they don't know how to go. Oh, that's a good delivery, flying high. The strip has good bounce in it. We've witnessed that in the first innings. Because in this tournament so far, none of the chasing team have been successful
as we watch Anwar Ali, 1 for the over. And it's not entirely due to the conditions, like you said. Lacking a plan, the execution, losing wicket at wrong times, lack of game awareness where a partnership is broken. The role of the other set batter is to carry on. We've seen wickets fall in protection there. Yeah, the fall of wickets at wrong times and in wicket falling in clumps really hasn't helped the chasing sides. This is what Sindh will be hoping for, and this is what Balochistan will look to guard against. Yeah, usually the trend, and I'm not sure how much that can affect the captains or the teams. It can be a very subjective discussion. Pushing hard for 2, pretty decent between the wickets. Khan will come back for the second one. It's good running. 2 to end the over, 7 gone. Balochistan 45 for 2. Nice breeze blowing today. Once again, the problem, the chasing teams. Batters getting in and out. Nasibullah got a start, but out at the wrong time. So did Asad Shafiq. And the partnership building. It's an early stage, but that is the key. If Sindh keep taking wickets, I think they will remain in the game. And that's the moment where right arm leg spinner Zahid Mahmood has been brought into the attack. So he's worked on his googly a lot. He's bowling quite nicely yesterday. 70 wickets, average of 20 and an economy of 7.3. Pretty decent at this level. Been bowling well. Having a word earlier with him, and he said that he can do better. He's worked hard on his bowling. And as you mentioned, googly as well. And he said that surface, a good thing to bowl on this one because it has a little bit of grip in it. A lot of batting to come. Haris Sohail, got Santalat, Mad Butt. No worries as far as the resources are concerned for Balochistan. Lot of runs though, this middle order. This is key, this partnership. Bangal Zai, a very good half century in the first innings, first game. So did Shan. Only one. Mere paas. Sindh needs wicket. They cannot contain this run. Wicket needs to attack and get right field placement. Right now, plenty of room to maneuver with singles and doubles. Big shots coming, lads. Big shot coming. That's what Sarfraz thinks. Pinned on the crease. Bangal Zai. That rush through. I think it was just sliding down, but excellent delivery nonetheless. Yeah, just getting on. Held his line. No worries there. You could see that. Just a half call from Sarfraz as well. ये वाली बैटिंग चाहता हूं मैं देखना जरा क्या बात सही है Again, when we talk about how players approaches different things, you've got as a captain a lot of variety how you deal with different players. How important do you think the mindset of the captain is in terms of how it travels down onto the team? That's smartly played. He'll do that to you. He's a very busy cricketer at the crease. Exceptional batting. Shan Masood, he's up and running. A bit of room outside the off stump. He saw the gap and went for the reverse sweep. Hit it quite hard. Good use of the wrist
He's really come up leaps and bounds with his reverse sweep. We've seen him play it time after time. His execution is perfect. Zahid quickly redeems himself, correcting his error. That's what Sarfraz wanted of him. Got to finish off over number 8, 52 for 2. They're cruising Balochistan at a decent run rate. 150 required is 7. Not far. But in light of Bangalzai, Shan and many more to come, it doesn't look like a hard task for them. That required run rate of 7.58 wouldn't scare the modern day batters. But we've seen chases getting derailed. This is what Sindh will be hoping. Anwar Ali, the Kenny operator. Just the 4 fielders in the ring on either side. Anwar Ali, he has an important role to play in these middle overs. Usually applies the cutters, lower deliveries, Yorkers as well. They need dot balls to create some pressure and wickets to follow. 3 sweepers on the onside, all of them. It's the fine leg up in the ring on the onside. Plenty of room to maneuver the ball in that direction. No worries there. They'll keep rotating the strike. Yes, boy. The partnership in the first game that was between Shan and Bangalzai was 111. That tells you that these two can bat. Shan is pretty decent in how he creates a plan whenever he's batting out in the middle. Same field for the left-hander as well. 45 up in the ring, 3 sweepers. Just the deep cover on the offside. And really just looking to build some pressure by bowling some dot. So far, he's gotten away quite cheaply. No, that's smart. Really smart. He's playing with the field. He's playing with Anwar Ali. That's superb from Shan Masood. Premeditation, all right. But he knows his game well enough. He knows Anwar Ali well enough. That was the gap that was available. The only gap on the onside. 45 up in the ring. Shan just guided it away. That length gave him plenty of time. It's a clever piece of batting. Moves on to 13. Bangalzai on 11. He'll keep ticking the scoreboard, that's for sure. He doesn't love or allow the bowler to dominate him. One feels Shan is the key here. Because Haris is short of cricket. Santalat is short of runs. So he's the key. And at the fielder back. 5 already. 2 deliveries to go. The reason I say Shan is the key because Bangalzai is quite young, but when Balochistan won the first game, these two contributed heavily with the bat. They got out cheaply. And in quick succession of one another in the second game, that's where Balochistan faltered. Good one, just surprising Bangalzai. Anwar Ali, he'll change his length according to the batter as well. Well, you've got someone as Shan out in the middle who's in superb form. And apparently we can't witness any weak areas right now. As an opposition captor, would you allow and wait for him to just commit a mistake, or you will set a field for him? Sindh doesn't have a lot of runs to play with. You can always bring an extra fielder up in the ring and throw challenge
even to Shan Masood with the kind of form he's in. But also, what I see is that Sindh is just sticking to regulation fields for the moment. They'll run away. There'll be another boundary. 2 boundaries in this over. An expensive one for Sindh. 9 overs gone. Balochistan 62 for 2. Wahid Bangalzai hasn't hit his traps just yet, but that boundary of the last ball of the last over will give him some confidence. The required run rate is not very daunting. He can take his time, but what's important is, because there's a lot of eyeballs on him, he needs to show that consistency. These are the 2 wickets. Asibullah once again got off to a start but lost his wicket. This I thought was good bowling by Abrar. Throwing challenge to Asad Shafiq, keeping the field up. He got rewarded thanks to a marvellous catch from Saad. Another single. They're stealing it. No problems at their end. You're asking about what they can do to dislodge Shan Masood. But I don't see anything out of the box just yet from Sarfraz and Saud Shakil. At mid-on up, you could have kept him on strike for another delivery. As it is, he rotated the strike, and Zahid will have to come up with a different plan against the right-hander. Down the track, wanted to launch it. Got away with it. I don't think that's needed of Bangalzai. The cruising allowed. RS Sohail getting warmed up. He can score big, he can hit big. We'll be hoping it doesn't go to that extent. Oh, again, just attempting that reverse. And he said, I'm watching you. That's what the coaches tell you when you're running into ball. Keep watching at the feet of the batters. Think what he's doing for as long as you can. And Zahid told Shan Masood that I did see that coming. Only one. This is a good battle. Very, very skillful, both of them. Zahid Mahmood for once was thought of being very one-dimensional with just leg spinners. You can see a different side to his game in this season already. Third game, big shots coming. He's come up with some variations. Googly working well for him as well. South. Goes aerial. They are fielding commencing in. And it's taken. Bangalzai throwing away his wicket. And yet again, it's Saad at the receiving end. Made a good call. This was in the air. Saud Shakil was going there as well, but Saad Khan called it nice and early in the cloudy skies. He really judged it well. But Bangalzai will have to have a very hard look at himself for the shot selection. Not much of footwork. Absolutely collapsed in the crease. Weight going backwards. That's why that ball didn't travel very far. But Saad did. And he took care of Abdul Wahid Bangalzai, who's gone for 16 now, and Balochistan 65 for 3. RS Sohail walks in. I hope it's not the self-destructive mode for Balochistan yet again. Just needs 79, 78.
61. He can bat, there's no doubt about it. Got a very mature head on his shoulders. He did make his name earlier on in his career with his T20 performances. Over the years, he's found it much easier in other formats, including the 50-over format and in Test cricket as well. Lack of form, fitness and injury. I've seen him play very little cricket in the last 12 months. Swept away. And that'll be a 4. Not good bowling, but they'll take it. Sarfraz not very happy with Zahid Mahmood. Not a good delivery after taking a wicket, allowing Shan almost a free hit outside the leg stump. Too good a player to miss out on that. At the halfway stage, Balochistan 69 for 3. Left arm covering. Right arm over it. हारिस सुहेल और शान मसूद इस टीम के दो बड़े माने हुए बैट्समैन विकेट पर हैं और ये मार्का गर्म हो रहा है। अनवर अली के अच्छे स्पेल वो भी एक वजह रहा है। एक एंड पर उन्होंने ज़्यादा रन्स नहीं दिए, अच्छे बाउंसर्स किए हैं, उसी वजह से ज़्यादा परेशान थे और स्पिनर के खिलाफ सामने हिट करते हुए आउट हो गए। अच्छा कैच लिया साद ने पंगल जई का, इनको फ्लाइट दिया था जाहिद महमूद ने। तो स्पिनर को सामने हिट करना ये इतना आसान रहा नहीं। कहा जाता है कि स्पिनर को आप सामने हिट आउट कीजिए, लेकिन यहाँ रावलपिंडी में बहुत से खिलाड़ियों को हमने कैच आउट होते हुए देखा है जब भी उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। सिकंदर इस विकेट को देखते बंगल जई का ये स्टाइल है नहीं खेलने का, जो इन फोर्स अटैक होता है। जब 16 बनाए 22 गेंदों पे, आई थिंक ये जो शॉट था वो मजबूरी में और वो प्रेशर में उन्होंने बनाया है क्योंकि ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम कर गए थे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें आधा स्कोर हो चुका है, कोई ज़रूरत नहीं है बलूचिस्तान को किसी पैनिक में आने की। 7.4 ये बहुत गेटेबल है और ये पेयर अब इसके बाद हारिस सुहेल और फिर आपके ऑलराउंडर्स शुरू हो जाते हैं। पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत नहीं। एक ही रन इस बार बना सके, पूरी तरह मुस्तैद थे मीर हमजा। मैं वापस आऊंगा स्पिनर को सामने जो छक्के लगाने में कामयाबी नहीं मिल रही बैट्समैन को, और उसकी एक वजह यह भी है कि अक्सर दूर से खेलने चले जाते हैं। इनकी पिच से जब दूर रह जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इस 72 गज की बाउंड्री को क्लियर करना। कल से ही मिलती जुलती सूरत हाल है। कल भी तकरीबन ऐसे ही मौके पर सदर्न पंजाब के बॉलर्स ने बलूचिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग में गिरा लगाना शुरू की थी। उन्हें एक यकीन हो चला था कि वो ये मैच जीत सकते हैं। सिंध की बॉलिंग ज़्यादा आजमूदा कार है। अनवर अली ये बाउंसर का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। सब बॉलर्स में से मिडिल ओवर्स में गेंद की जो सीम है कमज़ोर होने के बाद भी अच्छे बाउंसर्स किए हैं। इस पिच पर सरप्राइज़ किया बैट्समैनों को। अभी तक जिस तरह की कप्तानी देखी है सऊद शकील की, अच्छा लगा कि वो मिक्स इन मैच कर रहे हैं। 10 ओवर्स में हर बॉलर से 2-2 ओवर करवाए हैं, जो इनके 5 ऑप्शंस हैं। दानिश अजीज़ को उन्होंने ट्राई नहीं किया। मेरी नज़र में तारिक साहब वो जो 4 ओवर बचे हैं ना, 2 अबरार और 2 जाहिद महमूद के, वो फैसला करेंगे इस गेम का, किस तरह से बलूचिस्तान उनको खेलता है। विकेट ना दे, बेशक रन ज़्यादा ना मिले। दानिश अजीज़ को आज बॉलिंग ना कराने की वजह भी ये है कि अबरार अहमद आ गए हैं। इस बार टिकल किया एक ही रन के लिए। जाहिद महमूद और अबरार अहमद ये 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं।
पिछले दोनों मैचेस में जो इनके ऐसे बॉलर्स से पार्ट टाइमर्स उनसे बॉलिंग कराई जा रही थी, साइम अयूब से भी ओवर्स कराए गए थे, ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हुए नजर आए थे और ये भी लगता है गेम को स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्क से लगता है कि लेग स्पिनर होंगे। अच्छा लगता है, फैमिलीज मैचेस देखने के लिए आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता दिन ढलता है, थोड़ा मौसम बेहतर होता है और थोड़ी देर गेंद हवा में थी, मुझे लगा सोहेल खान शायद करीब होंगे। बहुत बड़ी विकेट है शान मसूद की। चले जाओ पीछे रहो सऊद। ये आपने सरफराज की आवाज़ सुनी, आखिरी गेंद है, कितना अहमियत होती है इसकी। आपका ओवर अभी तक 4 रन आपने दिए हैं, कोई लूज बॉल ना करे, खराब आखिरी बॉल पूरा ओवर खराब कर देती है। यहाँ ओवर को अच्छा कंस्ट्रक्ट जब आप करते हो तो फिर उसको अच्छा ख़त्म करना भी ज़रूरी होता है। अनवर अली जानते हैं, इसलिए उन मिड ऑन के फील्डर को जो सऊद शकील कप्तान थे, इस गेंद पर बाउंड्री जाने का कह दिया ताकि एक ही रन बन सके। एक और उम्दा ओवर, सिर्फ 5 रन अनवर अली ने दिए, 74 पर 3 बलोचिस्तान। अच्छा, आखिरी बॉल इस बात की अहमियत भी रखती है कि आपके अपना ओवर अच्छा रहे, साथ साथ बैटिंग साइड की उससे अगर आपके आखिरी बॉल पे आपको चौका या छक्का पड़ जाए तो वो मोमेंटम अगले ओवर में भी चला जाता है। बैट्समैन रिलैक्स शुरू करता है अगला ओवर के, मैंने अपने पूरा कर लिया कोटा। लेकिन जैसे इस ओवर में सिर्फ 4 या 5 रन बने हैं, तो अब इस वक्त शान मसूद और हारिस सोहेल सोच रहे हैं कि अभी हमें इस ओवर में मुकम्मल करना होगा वो गैप जो रह गया है। जाहिद महमूद आसान नहीं करेंगे इस चीज़ को, इसलिए ओवर की पहली बॉल आखिरी बॉल सेट करती है टोन। आखिरी बॉल बैट्समैन के लिए सेट करती है टोन और पहली बॉल बॉलर के लिए। और अक्सर देखा गया कि आखिरी गेंद पर जो बॉलर्स होते हैं ये बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेग साइड में खेलने चले गए थे, अगेंस्ट द टर्न खेलने चले गए। जाहिद महमूद इन दिनों गूगली भी कर रहे हैं, इसके अलावा ये आम बॉल भी करते हैं कई बार। ये गूगली थी, निस्बतन हवा में छोड़ के की। लेट हो गया था बेटा, रुक क्यों रहा था, फौरन काटता बॉल को। इधर आइए। इन दिनों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जाहिद महमूद। दानिश, यस। इस बार रन नहीं मिल सके, लेकिन रिवर्स स्वीप जो है ये अब इनकी बैटिंग का खासा बनता जा रहा है। वाइट बॉल क्रिकेट में शान मसूद शाबाश शाबाश शाबाश। वो बहुत ज्यादा बाउंड्रीज मिल चुकी हैं, अच्छी पोजीशन में आकर शॉट खेलते हैं। ऊंचा शॉट लेकिन सेफ रहेगा क्योंकि इन्होंने खासा प्रैक्टिस किया हुआ है शॉट को। शान मसूद ने 6 रन हासिल किए रिवर्स में। यहाँ जोर से भी खेला, इस बार फ्लैट गेंद करने की कोशिश की थी, अगेंस्ट द टर्न खेले और मुश्किल में डाल दिया है कप्तान सऊद शकील को। जहां तक फील्डिंग सेट करने का सवाल है, स्पिनर पर अपने खेल को बहुत बेहतर बना लिया है शान मसूद ने, खासतौर पर लेग स्पिनर पर। अरे ये भी एक दुखती रग थी, लेग स्पिन बॉलिंग भी शान मसूद की बैटिंग में। लेकिन इनकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम होगी। ठीक है, शाबाश शाबाश। जिस तरह इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर मुख्तलिफ कोचेस की खिदमत इनफरादी तौर पर हासिल की। जनूबी अफ्रीका गए थे कैरी कस्टन के पास, उसके बाद ब्रेंट वुडहिल के पास ऑस्ट्रेलिया गए और वो सामुल हक जो वो इनफरादी तौर पर ही खिलाड़ी बने थे, मुख्तलिफ बाहर के कोचेस के पास जाते थे टेनिस खेलने के सिलसिले में, तो ये भी अफोर्ड कर सकते थे, तो क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल मुख्तलिफ वर्ल्ड क्लास से खिलाड़ी लग रहे हैं। शान मसूद, बड़ी हैरत होगी अगर ये इस सीज़न में पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे वाइट बॉल और रेड बॉल फॉर्मेट्स में। 12 के बाद 82 पर 3।
आपने जिक्र किया कि खिदमात हासिल की जाएं एक्सपर्ट से और जाके अपने किसी गेम के किसी हिस्से को और पॉलिश किया जाए। वेस्ट इंडीज़ के बड़े खिलाड़ी क्योंकि करीब है उनके अमेरिका, फ्लोरिडा जाते हैं और बेसबॉल के कोचेस से पावर हिटिंग की ट्रेनिंग लेते हैं। क्योंकि अगर किसी ने, जो हमें लोग सुन रहे हैं, बेसबॉल अगर आपने देखा हो तो वो बड़ा एक तरह से क्रिकेट का हाई बैक लिफ्ट बैट्समैन जैसे खड़े होते हैं, फुल टॉस को मारते हैं, उससे उनकी हिटिंग और उनके बैट स्विंग में बड़ा फ़र्क आता है आंद्रे रसल टाइप या जो टॉप ऑर्डर हैं या जो बड़े हिटर्स हैं। तो कभी कभार दूसरा स्पोर्ट भी आपको हेल्प करता है और बड़ी, मुझे इसकी डेट्स नहीं याद, लेकिन अमेरिका में भी स्टार्ट हुआ था, क्रिकेट से ही स्टार्ट हुआ था ये जो सिलसिला है, खेली जाती थी वहाँ पे रेगुलरली, वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करके बेसबॉल निकल आया। डेट मुझे सन याद नहीं आ रहा जब पहला मैच खेला गया था। और अब आप बताइए, नो बॉल अबरार करेंगे तो फिर क्या होगा? स्पिनर नो बॉल करे उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जी हाँ, ये मुतमिन नहीं है अंपायर के फैसले से और शायद इनका जो पिछला पांव है वो लगा है रिटर्न क्रीज को और आप अपना जो पिछला पांव है जब वो लैंड अगर करेगा रिटर्न क्रीज पर तो फिर वो नो बॉल ही होगी, क्योंकि अबरार का शायद ये ख्याल था कि ये फ्रंट फुट की नो बॉल नहीं है। इससे अंपायर को वजाहत करना पड़ी मोहम्मद आसिफ को, जो खुद भी स्पिन बॉलर हैं। ये आप देख सकते हैं इनका दायां पांव जो है वो रिटर्न क्रीज को कट कर रहा था। सही फैसला, क्रीज का इस्तेमाल करना चाह रहे थे लेकिन हद से आगे चले गए और ये फ्री हिट थी और फील्डर जरूर आ जाएंगे गेंद के नीचे, लेकिन साइम अयूब का ये कैच काउंट नहीं होगा। फ्लैट बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं अबरार अहमद। ये भी शान मसूद की तरह काफ़ी अब बेहतर क्रिकेटर बनकर सामने आए, नई गेंद भी करने लगे हैं वाइट बॉल फॉर्मेट्स में, अच्छा कंट्रोल आ गया है, कैरम बॉल करने में महारत है। ये विकेट ले चले थे, विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके, ये स्टंप का मौका था। जी हाँ बिल्कुल, ये हम साइड ऑन देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा, क्योंकि हारिस सोहेल मुझे नहीं लगता कि वो वापस पहुंच पाते। लेग स्टंप के बाहर वाइट बॉल स्पिनर की पकड़ना इतना आसान नहीं, बॉडी को लग के निकल गई गेंद सरफराज के, लेकिन अगर ये ग्लव में अटक जाता बॉल तो डेफिनेटली हारिस सोहेल परेशानी में आ जाते। ये वाइड भी हो गई इस ओवर में, नो भी हो गई। खुद जा शाबाश शाबाश शाबाश, कम ऑन। रीड कर लिया था हारिस से, ये ऑफ स्पिन होगी। करेगा ऊपर से। किंगडम वैली नेशनल T20 कप अब अपने पूरे जोबन पर है इस रावलपिंडी के शहर में। आप ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जाइए किंगडम वैली के और इनामात पाने का मौका है, उससे फ़ायदा उठाइए। सख्त ज़्यादा ख़तरा मोल लेने के मूड में नहीं है शान मसूद। अब वो जानते हैं कि उन्हें सर बसर जाना होगा इस इनिंग्स में। अदब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर ये पार्टनरशिप ख़त्म हुई तो फिर मुश्किल हो सकती है। अक्सर देखा गया अबरार जब ऑफ स्पिन करते हैं या गुगली करने की कोशिश करते हैं तो वो उस वक्त फ्लाइट देते हैं, लेकिन जब कैरम बॉल का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त फ्लैट आते हैं। यहाँ से भी एक क्लू मिल जाता है बैट्समैन को रीड करने का। बॉल को बिस्टों में कर, बीच में से बेटा जितना बीच में करेगा उतना चांस आउट होने का। अच्छी क्रिकेट शान मसूद की जानिब से, आहिस्ता आहिस्ता खतरा मोल लिए बगैर अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं। 93 बलोचिस्तान 3 विकेट के नुकसान पे। चले जा रहा है उधर वहाँ कहाँ से तू बॉल किया रहा है? सुन तो इधर तो देख, इससे बात कर रहा हूँ मैं। आउट कहाँ होगा बैट्समैन?
ले आओ लाला को, ले आओ, क्या करें, अब आउट का चांस है, अब एक किसी एक से करा लो। ये पिछले ओवर में हारिस सुहेल जो है इनका पिछला पांव उठ गया था। सरफराज अहमद अगर इस गेंद को कलेक्ट कर लेते ये विकेट मिल सकती थी और इसकी ज़रूरत थी इस मरहले पर सिंध को और ख़ास तौर पर मिस्ट्री स्पिनर को। बदकिस्मत रहे अबरार अहमद। और उठाकर खेला, फील्डर थे पीछे लेकिन गेंद पहले रह गई शर्जील खान से। एक प्लानिंग के तहत दोनों खेल रहे हैं। 7 का रन रेट बनाया हुआ है, 7 ही रिक्वायर्ड है। जब से हम आके बैठे हैं यहाँ पे 10वें ओवर के ख़त्म से इन्होंने एक मेंटेन किया हुआ है इस रन रेट को, और यही खासियत है सीनियरिटी की और गेम को समझने की कि क्या रिक्वायरमेंट है, कोई बड़े शॉट्स चाहिए नहीं है। और आने वाले बैट्समैन के लिए ये दोनों सीनियर्स जो कोशिश कर रहे हैं कि जाहिद महमूद और अबरार के ओवर्स जितना पी जाएं। फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट आपको हिट लगाना आसान होगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। कल की जो गलतियां थी चेज़ करने में वो बलोचिस्तान फिर से दोहराना नहीं चाहेगा। यासिर शाह ने अच्छी बॉलिंग की है, अच्छा लीड किया है साइड को। इस बार जोरदार हिट लगाई और स्क्वायर लेग पोजीशन पर 2 फील्डर थे लेकिन वो सिर्फ देखते रह गए कि गेंद बाउंड्री से आगे कहां तक लैंड करती है। शानदार शॉट शान का, उनका छक्का, और अब रवानी पूरी तरह बलोचिस्तान के साथ होने लगी है। शान मशूद की जो बैटिंग है उसमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है आपको। जो रिवर्स में भी छक्का मारा, ये शॉट भी उन्होंने खेला, पूरे शॉट्स हैं और बड़े छक्के हैं और अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं क्रिएट भी कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज शॉट्स की। प्रेशर अपनी तरफ से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए बॉलर को, और वो पोजीशन में लाना चाहते हैं टीम को जहां से उनको आगे आने वाले बैट्समैन को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। 100 रन मुकम्मल हो गए इस छक्के के साथ। शान मसूद जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये मकाम बनाया है। जिस तरह हम पहले बता रहे थे कि अभी हाल ही में काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इन्होंने बड़ा कामयाब सीजन गुजारा डर्बीशायर में। अभी इन्हें जाना है दोबारा डर्बीशायर के लिए, आखिरी 2 मैचेस खेलने सितंबर में जाकर, लेकिन ये टूर्नामेंट मिस नहीं करना चाहते थे। एक लगन है शान मसूद में और एक उन्होंने अपने लिए हदफ मुकर्रर किया हुआ है। हालांकि वो जानते हैं कि उनको मुश्किलात भी हुई हैं, लेकिन जो दौड़ते हैं ठोकरें उन्हीं को लगती हैं। ज़ाहिर है अगर आप पाँव तोड़वा कर बैठ जाएंगे तो फिर तो कोई इम्कान नहीं होता ठोकर का। ओवर इख्तिताम को पहुंचा। सरफराज अहमद हमेशा की तरह आज से खुशदिल। इधर ही करता है, इधर ही आउट हो जाता है यार। Yes, mate. Yes. Coming. Big shots coming, lads. Big shots coming. South. What the शादी आ गई? या हमेशा की तरह सरफराज अहमद एक्साइटेड, खेल से कभी भी दूर नहीं रहते। इतने बरस गुजरने के बावजूद खेल से उनकी जो लगन है वो आज भी कम नहीं हुई। डोमेस्टिक क्रिकेट को भी ये उतनी संजीदगी के साथ खेलते हैं, एक क्लब मैच को भी जितना ये टेस्ट मैच खेल रहे हों या चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हों पाकिस्तान के लिए।
सरफराज अहमद की मैंने जो आपके साथ पहले हमारी बातचीत हो रही थी जब हम बैठे हुए थे दूसरे कमरे में, कि सरफराज की मौजूदगी जो है वो एक तरह से एक बहुत बड़ा सपोर्ट है सऊद शकील के लिए। और सऊद शकील जो फील्ड पर नज़र रखते हैं कौन कहाँ खड़ा होगा, और सरफराज बॉलर के साथ अपना रिश्ता कायम रखते हैं, उससे बात करते रहते हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि बैट्समैन क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है विकेट के पीछे खड़े होके। और एक अच्छा एक कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग एक सीनियर प्लेयर और एक नए कप्तान के बीच में, और प्लानिंग बनाते हैं आपस में मिलके किस तरह से लेके जाना है गेम को। या मोइन खान जो हैं वो विकेट के पीछे खड़े होकर बहुत ज़्यादा बात किया करते थे, स्पिनर्स का वो हौसला बढ़ाया करते थे, खेल में पूरी तरह में शामिल रहते थे। कई विकेट कीपर्स का अंदाज बिल्कुल दूसरा होता है, जैसे कि राशिद लतीफ़ थे, ज़्यादा वक्त चुपचाप सोच कर गुजारते थे। वो आंखों से बात करते थे, बॉलर समझता था क्या चाहिए। बहुत सारे कीपर्स ऐसे हैं अराउंड द वर्ल्ड, आप देखेंगे संगाकारा हैं, बात करते थे। ऑस्ट्रेलियाई कीपर काफ़ी नए भी और पहले वाले भी, वो बैट्समैन से ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। सलीम यूसुफ भी ऐसा ही किया करते थे, अक्सर की गुफ्तगू होती थी इयन बोथम के साथ जब पाकिस्तान इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस होते थे। एक बड़ा अफेयर था इयन बोथम के साथ सलीम यूसुफ का। नैन मूंगिया थे। तो अब जो दरकार औसत है ये मौजूदा औसत से कम हो गई है। इससे ज़ाहिर ये होता है कि इस वक्त हालात जो हैं पूरी तरह बलूचिस्तान के हक़ में हैं और सूरत हाल को ये संभाल चुके हैं। शान और हारिस जो हैं ये अब इख्तियार में आ चुका है सब कुछ इनके। अच्छी पार्टनरशिप, 28 गेंदें खेलकर 39 रन तक पहुंचाने में कामयाब हुए। स्लोअर बॉल था, अच्छा ग्राउंड कवर किया शर्जील ने डीप में। वही रन रेट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 7 का करंट है, 7 का दरकार है। बलोचिस्तान ने अपनी गिरफ्त मजबूत की हुई है इस खेल पर, इस चेस पर। यासिर शाह लेग स्पिनर्स नहीं बल्कि स्पिनर्स में अब बहुत आगे निकल गए हैं टेस्ट विकेटों के एतबार से। और इस बार फील्डर हैं ये कैच लेने में कामयाब हुए। साइम अयूब ने इस बार बहुत ही उम्दा रनिंग कैच लिया मिड विकेट पर, और सुहेल का वापस आना सिंध के लिए अच्छा शगुन रहा। उन्होंने ये बड़ी अहम विकेट हासिल की, 40 रन की पार्टनरशिप का खात्मा हो गया। और यही सिंध इस वक्त कहाँ था। जी हाँ, अहम कैच, लेकिन कहीं शायद थोड़ी देर हो गई सिंध के लिए। फिर भी एक विकेट जो है उनको थोड़ी सी उम्मीद जरूर रखाएगी इस मैच में। 38 चाहिए 31 पे, 10 बना के आर एस सोहेल आउट, 105 पे 4।
सिंध की टीम अभी भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं है और उन्होंने ये विकेट ली है। कई बार पहले भी उन्होंने ये दिखाया है कम स्कोर पर आउट होने के बावजूद कि वो आखिरी गेंद तक, आखिरी सांस तक मुकाबला करना चाहते हैं। हुसैन तलत आएंगे, कल मैच को अच्छे तरीके से फिनिश नहीं कर सके थे। इसी नंबर पर आकर अभी अमाद भट्ट को भी आना है क्योंकि फास्ट बॉलर्स अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो कलीद है वो शान मसूद हैं जो 42 रन पर नॉट आउट हैं। नए बैट्समैन के लिए मिड ऑन वो आगे लाने के मुतालिक सोच रहे थे, फिर 7 को अब पीछे हटा दिया, ना इरादा तर्क कर दिया सऊद शकील ने। 4 फील्डर हर सूरत में आपको 30 गज के दायरे में ही रखना है। अच्छी डिलीवरी सुहेल ने बाउंसर के जरिए खुशामदीद कहा हुसैन तलत को और ये उनका कामयाब ओवर पुल करने के लिए गए, लेकिन शॉट पर इख्तियार नहीं था हारिस सुहेल का। पुल शॉट और कट शॉट ये 2 ऐसे स्ट्रोक हैं जो कम लगाते हैं हारिस। तो कामयाब ओवर सुहेल खान का रहा 106 पर 4। The cat and mouse chase is on. Sindh fighting back, grasping to every opportunity they can to make sure they might end on the winning side. 37 required of 30. Khan Masood, the person, Balochistan. Mir Hamza is back now. The comparison after 15 overs, and was 104 for 5, and Balochistan is 106 for 4. Not much different, Ali. Absolutely. I think Sindh had a longer tail. That this thing goes in favor of Balochistan, though. Good run. Shouldn't be a problem for Balochistan. We keep on saying that again and again. But today they might redeem themselves. Khan has been superb in the way he approaches the game. He's taken on the fielders, he's taken on pacers and spinners. Totally different all of a sudden when he walks out and plays. Yep, I agree. All eyes are on Shan Masood. How he takes his team home from here on. It's just amazing to see how he has transformed himself from an opener to a middle order batter. And he is scoring runs. We saw him score in first game over here also. Playing a good inning, he's not on 42. And Balochistan would be hoping that he finishes off the game. He's pushing for the second one. He wants Hussain Talat to come, but really good fielding in the deep. That's what Sindh needs. The fielders should be attacking the ball. Ibrar on this occasion. Yep, bhago, bhago, bhago was the call from both the batters. The fielder had covered a really good job. Well, look at that. He had a distance to cover. But these two batters, they are fit. They could have probably taken the chance. Oh, he's gone! Another one for Sindh. Hussain Talat. His bad form continues, and Mir Hamza is the one getting another big breakthrough. Balochistan 5 down. That extra bounce, again troubling the batters. Hussain Talat wanted to come down the track. Have a look at that again. That extra bounce, probably on a pitch like Ravi Stadium this might be on, but not over here. These are excellent pitches. They've got extra bounce. Got to be very careful facing the fast bowlers.
2 runs, he could only score 108 for 5. I tell you what, Sindh is not going to make it easy. They will fight till the end, and they know they have that hope. They're getting closer to it, making things difficult. But just only the lone warrior standing is Shan Masood. They managed to get his wicket. I think Balochistan will fall behind. Just so disappointing to see, Marina. Such a huge lineup, such experienced lineup of this Balochistan side struggling for the second consecutive time. The other day we saw them struggle against Southern Punjab and now against Sindh. It's pretty disappointing to see. What do you think would be the reason? So much of experience and they're unable to get to that 150 mark. Ahmad back now. Oh, confusion. It's beaten the fielder. And Masood not really happy with how Ahmad took off. That's the wicket. We've seen a lot of time the extra bounce. Just a shimmy down the wicket. It was nothing of a shot. He should have gone hard if he wanted to cut it. Just enough tickle on it and Sarfaraz doing the rest. They've got a really good death bowling, Sindh. Experience. Sohail Khan operating for one end, Mir Hamza from one end. The quality bowlers, you just cannot take them easy. He's going to challenge them for sure. Rajil with the throw does well. The pressure is just mounting on Shan especially because he knows he has to score runs and hold his end as well. It's a double responsibility. You got to score runs and keep your wicket too. It's never easy. Have a look at that bowling card. Sohail Khan, magnificent. 3 overs for just 19 runs, 2 wickets. Mir Hamza, amazing. 3rd over, just 20 runs. And we're really without a wicket. Otherwise, everyone has chipped in. All the 4 pacers got overs left. And that's where probably Saud Shakil has an advantage. Off pace. He's giving nothing away to the batters. And it's a good single, bringing Shan back on. That ends the over. 16 gone. Balochistan, Nelson on board, 5 down. Balochistan need 32 more runs to win from 24 deliveries. Have a look at the comparison after 16 overs. Nothing really to talk about it. It's all similar. Just 2 runs ahead Sindh were at the moment. At this moment after 16 overs. The only thing going in favour of Balochistan is Shan Masood. Still on crease along with Ahmad Bhatt. Yasir Shah can also bat. Kashif Bhatti can also bat. Well, in normal days, this should be an easy chase, but this is a different pitch. This is a different bowling lineup. They'll be hoping it doesn't go to that extent. Yasir coming in and tail-enders. These 2 should finish, Ahmad and Shan. That's good field placement, just trying to invite Ahmad Bhatt to go aerial. Did you hear Sarfaraz? He said, "Upar se marne de." Just bringing in fielders. Brilliant delivery, right on target. He's putting pressure on it. That is so good for Sindh and Saud Shakil to have somebody like Sarfaraz Ahmed in their camp behind the stumps. So much experience. Good bowling. Got a lot of protection. It's not going to be easy for Ahmad to just come and unleash. Shan on 44, just 6 shy.
Derbyshire, he scored 543 runs in 14 matches. Just a hint in what form he's carrying. Strike rate of 139, 550s, an average of 45.2. That's what Sindh is dealing with. Remember, he used to represent Sindh. He just missed transfer to Balochistan last year. Oh, confusion there, and I think they'll go upstairs. Probably just home, I guess. It would be a very good breakthrough for Sindh. I think he's safe. His decision, still waiting for it. Madbak took so much time to say no. Let's have a look. Oh, direct throw was needed probably. Touch and go still. That's a very, very tight call, I tell you. Absolutely tighter than I thought. Oh, that's close. I can't say. I'm not going to say anything on this. This is so close. I think Sindh will cherish it. They'll have to wait for the decision, the confirmation. Mighty, mighty close. Mighty close. They managed to get this breakthrough. Sindh is through. Balochistan will be in a lot of trouble. That batsman, another set batsman would be travelling back to the dugout. Given it not out. Surprised? I am. That was a very tight call, and I think it was an out, but the umpires have the final call. They'll have to take it. Shan will definitely take it, and so will the Balochistan team. He's still out there fighting for the win. Down the track, it will only be a single. Huge moment. Huge moment in the game. If they had taken the wicket of Shan Masood, if this had gone in the favour of Sindh, it would have changed the course of the game. It was mighty close, I tell you, Marina. It was a game-changer moment. Probably the decisive moment of the match, I would say. Good bowling so far, just 3 of it. One more delivery to go. I don't know what to say. Let's have a look at it again. He's called it straight away, and I think it was a pretty decent throw. Straight into the glove, just above those bails. Oh, that was a touch and go. Only one. Very lucky. Very lucky, Shan Masood and Balochistan. Most important man of the team. And it was mighty close. 17 gone, 115 for 5. Confirmation, Shan Masood the one, standing between the win and Sindh, 46 not out. But he can be very handy. 28 required of 18 deliveries. I still can't get over that run-out appeal. Still can't get over it. In my opinion, that was out. Simple as that. There was some part of the bat behind the line. Pushing hard, he's pushing hard. Fielders are doing really well at the boundary. Rushing in, trying to abort that second one. Well, it was the moment where the match could have changed. But as they say, Ali, fortune favors the brave. Rashid Riaz, third umpire, this occasion.
The last delivery, Shan was not happy. He was thinking that there was two available. And Ahmad Bhatt again saying no to it. Probably taking charge in his own hands. Ahmad Bhatt wants to go big. Picking nicely and will pick up a boundary. That's poor bowling onto the pads, and he's being punished. Now we realize why he said no for that second run. Wanted to go big. Timed it beautifully. Onto his leg stump, easy pickings, just flicked it. Nice use of the wrist. The placement also excellent. There's a fielder inside at 45. All he had to do was clear it. Disappointment, yes, rightly so. He's not just all muscle. He has that certain touch to him. Time it really well. This time, just a single. Won't hurt that. Ahmad Bhatt has definitely has the potential to win the game from here for Balochistan. Alongside Shan Masood, we all know what he is capable of. He's already been given a life, in my opinion. The required run rate is 8.8. It's a very crucial over. It always is. 6 runs already coming off it. A lot of gaps, and that's what probably Shan would be thinking. This rotate strike, they've got the boundary. And good single. The fielders are on the edge. They can always exploit that distance. Yeah, that is very smart bowling on this occasion. To get in, decrease the pace a little, because he realizes that single is all right, but you don't want to be giving boundaries. That's the disappointment for Shan Masood. I think he could have placed that for a boundary. Was way outside off stump. An extra bound, but he's good enough to get on top of the bounce and jam it into fence. Got away. 7 already. Just 2 deliveries to go. So the plan is clear. They're going to go outside the off stump because there's a deep point in place. There's deep cover. Fielder at third is inside the circle. There's extra cover. There's long off. Going to go right outside the off stump. That's driven. That is the plan, but what's the plan to take wickets? Because they will not be able to contain these runs. 20 required of 13. They need wickets. 100%. One boundary here or there will make things very easy. They're not singles. You can't stop at this time. As you said, they need wickets. Mushtaq Ahmed, Yasir Shah, Asad Shafiq. He's always setting his hair. Whenever I see him, he's always just setting his hair. Yeah, he's the cameraman. He likes to be on the camera. Oh, misfield. They'll will run away for a boundary. That's the least thing you want. And Shan Masood will bring up his 50. 20th 50 all over. And 5th in Rawalpindi. He has been spectacular. Fantastic. We've been talking about it, that it's not easy transforming himself from opening position to middle order. And how beautifully has he done it. Putting the pressure on the captain. Forcing him to make a mistake. And that's a very, very important boundary to end the over. After 18, it's 127 for 5. The most experienced pro for Sindh, Sohail Khan, is back in the attack. Can he create some ripples? I know it's a hard task, just 16 required of 2 overs, but again, the importance of Shan Masood and Imad, that's what can make the difference. If anything has to happen for Sindh, it's this over. Sohail Khan, their most experienced bowler, bowling the second last over. There we go.
Smashed at, and don't run for that. It's into the gap. Hammered for a boundary. Excellent pickup shot. It was there in his zone. Have a look at that. In his zone. He likes it there, that cow corner. Placed it right between the two fielders. Beautiful batting. It's all too easy now. First ball boundary, pressure is on Sohail Khan. We've usually seen him, he knows how to take wickets. Not much to defend. Ahmad Butt seems like to be changing gears now. Flicked up nicely and make it two back-to-back boundaries. Not a good start to the over. Yeah, it tells the story. The Sohail Khan's body language. It's a poor delivery right onto his strength. That's leg stump, and when you've got a fielder inside at fine leg, you're asking to be hit. That's the easy pickings. Now 8 more runs required, 10 more deliveries. At least we're seeing a change that a team chasing is going to win. Yasir Shah did mention at the toss that he's going to change the trend today. And rightfully so, he's done that. 146 strike rate overall for Ahmad Butt. He's been sensible today. He's waited for the bad deliveries. He's went against the one which were in his strength. 8 already, just 8 more required. Quick single, no problems there. They've run well. And that is what happens when a fit cricketer like Shan Masood is playing. He will put pressure on his partner to run well, and that is what is happening. Because these two are probably the fittest cricketers in Pakistan domestic circuit, Ahmad Butt and Shan Masood. They run well, and that shows in their performances. Shan Masood, what a wonderful inning it has been. A match-winning inning. We can say it now. Not over till it's over. But yes, just 7 away. He would love to finish it off and carry the bat. Oh, good slow one. Just tackled nicely from Shan Masood. Sindh will be disappointed with the way how they batted. Again, it has been bits and pieces for them. There's no shortage of effort from this man. Whenever I've seen him play, he's always given his 100%. In this match also, he's into his 4th over, just 29 runs given, 2 wickets he's taken. He's just been an amazing servant of the game, Sohail Khan. He's got the man there, but it will travel over his head. And that's it. What a brilliant chase from Balochistan. Ahmad Butt finishing it in style. Wonderful performance. This was what was missing in the last game. The finishing point, and Ahmad Butt showing that why he is known as the best finisher at Pakistan domestic circuit. It's been a wonderful inning. There came a point when they were in a bit of bother when they lost Haris Sohail and Hussain Talat in quick time. After that, it was Ahmad Butt's heroics who helped Shan Masood also and won the game. The partnership was 35 of just 20 deliveries, winning the game for Balochistan. This was the moment. Again, the fielder was placed there for this sort of a shot, but the bounce and the carry this pitch has, if you put bat on it, it's always going for a 6. Great way to finish it. The winning shot. And Shan Masood leading from the front. Made sure he got in, he got a start, and then he capitalized on it. And that's what you expect from a senior pro who's been in form. You want to finish the match. You want to win games for your team. And that's exactly what he has done. Sindh, few things to think about. They had a great momentum coming into this tournament. Win back-to-back, but today,
It's probably the batting that had let them down. That was not that bad of a performance by Sindh. They did try hard. Had that run out decision gone in their favour, we might have seen a different result, because we know how important that was, Shan Masood's run out. But in the end, Balochistan winning it quite easily. There will always be ifs and buts. But you have to give credit to Balochistan, especially Shan Masood. And yes, in bowling as well, the way Yasir Shah led. That's the scorecard. Not much from the top order, but Shan coming in at 4 made sure he finished the game. RS scoring 10 runs, and Ahmad, but very important hand, and had a crucial innings to play in this run chase. Five bowlers used. Sohail Khan, the pick of them, getting 2 wickets with 35. A wicket for Mir Hamza, Abrar Ahmed and Zahid Mahmood. This effort was not enough to stop Balochistan getting to that 143 mark. And in the end, it was quite an easy chase. Now we can say that a team has won chasing. Balochistan has all the right to celebrate tonight, courtesy of Shan Masood. Brilliant innings, leading them over the winning line. That's how it all started for Balochistan. Hasibullah and Asad Shafiq starting off. It's a lot of talk going about Hasibullah. He started off in style, but this was the first one that was put down. Could have capitalized on this chance. This was a glorious drive through the covers. One to watch for. Asad Shafiq is always in great touch, in all control. That was brilliantly fielded. You have to give credit to Sindh as well for keep trying it. Some looseness every now and then, and this was the one where they managed to get the first breakthrough straight to the fielder. Asad Shafiq trying to improvise, getting down the track. He took on fielders and the bowlers as well. This was another half chance. You have to give it for the effort. This was a brilliant catch from Saad. On his toes, timed the jump really well, and in came Shan Masood. He carried off his sublime form. Used the crease a lot. Uncle Zaid probably wasn't required at this time, and he had to pay the price for it. On the other end, Shan kept on dominating. He dealt with the spinners with a brave heart, scoring every now and then, and he launched it himself. RS Sohail, the one you would expect to score big, but he fell down very quickly. Another disappointment for Hussain Talat also. And then this man came, Ahmad Butt, and took the game away from Sindh. This was an opportunity. This was the moment of the game, in my opinion. Things could have gone either way. In my opinion, it should have gone Sindh's way. And it was too late then. Shan Masood and Ahmad Butt doing it with some ease. We'll look at that for a shot. Nice pickup. Another nice use of the wrist by Ahmad Butt. He's so good with that. And this is how the game ended, with a brilliant 6 over fine leg. And Balochistan winning it by 5 wickets. So that's how the match panned out. Sindh, calling it right, decided to bat first, scored 142. Saad scoring 31, Sarfraz just 29, Saud 18, never get the momentum. Yasir, Kashif and Khurram grabbing 2 each. And in reply, Shan Masood, the top scorer, carrying the bat all the way, scored 53 runs. Important innings of Ahmad on 25. Sohail bagging 2, Abrar and Zahid the spinners. They managed to get 1, and Balochistan won by 5 wickets. We'll take a break now, and we will join you for the post-match presentation.
Hello and welcome to the post-match presentation of Match 7 of the Kingdom Valley National T20, and today Balochistan versus Sindh. Brilliant contest, low-scoring game, but first team to chase and win Balochistan up till now in the season, winning this match by 5 wickets. I'll welcome our guest today, Mr. Mohammad Ramzan. He is a sales manager at Kingdom Valley. Thank you for joining us. And he will be presenting the Kingdom Valley Player of the Match trophy and cash award of 25,000 rupees, and that goes to the man scoring 53 of 39, Shan Masood. Brilliant knock, 4 boundaries, 2 sixes, and played an important role in chasing this low total down and getting the 2 important points for the team. We'll request Shan to please join us and have a quick word. Shan, context of the trend में ये सवाल बनता है कि चेज़ नहीं हो पा रहा किसी भी टीम से, तो ऐसी क्या हिकमत अमली थी वो यू मेड श्योर कि गेम ख़त्म करके आऊँ? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि जब कोई चीज़ नहीं हुई हुई होती तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप पहली टीम बने और चेस करें। तो आई थिंक आज शाहजी ने भी यही बोला था कि हम शायद पहली टीम बनना चाहते हैं जो चेस करें। चैलेंज होता है, आप एक्सेप्ट करते हैं और उसका जो रिवॉर्ड होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो आई थिंक होपफुली ये एक दूसरा ट्रेंड भी सेट हो सकता है इस चेस की वजह से। यूजुअली कहा जाता है कि जो लो टोटल्स होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं चेस करने में, क्या ऐसी बात है इस टोटल में जो बना देती है थोड़ा सा टफ? देखिए, टफ चीज़ ये होती है कि आप किसी भी गेयर में खेल सकते हैं। यू डोंट हैव टू टेक द इम्पेटस। आपको ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि रन रेट 7 के करीब था, तो आपको ज़रूरी नहीं था कि आप पावर प्ले का फ़ायदा उठाएं या कोई ऐसी चीज़ करें। तो कभी कभार बैट्समैन इतना शेल में चले जाता है और रन रेट इतना ऊपर आ जाता है, जैसे हमारे साथ कल हुआ था एग्जैक्टली कि हमने 50 रन किए थे 6 ओवर में, और अगले 5 ओवर में हमने सिर्फ 25 रन किए थे और एकदम से रन रेट 11 आया। प्रेशर क्रिएट हुआ, आगा सलमान ने 3 आउट किए और मैच इसी तरीके से बदल गया और हमने ट्रेंड देखा है टूर्नामेंट में इस वक्त होते हुए। करंट फॉर्म, रीसेंट फॉर्म की बात करूं आपकी इंडिविजुअली, तो अगर मैं बोलूं इफ़ यू आर सेटिस्फाइड प्रॉब्ली यू विल से कि यू नेवर सेटिस्फाइड, यू वांट मोर, लेकिन एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर, कहाँ पा रहे हैं अपने आप को? व्हाट जोन आर यू इन? देखिए, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा माइंड कितना क्लियर है, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ अपने अंदर, और सबसे बड़ी बात है देखें आपका प्रोसेस कितना तगड़ा है। फॉर्म मैं नहीं मानता, फॉर्म आने रन्स, फॉर्म आने जाने वाली चीज़ है। आपके प्रोसेसेस अच्छे हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आपके हार्ड यार्ड्स हैं गेम की तरफ, अगर वो अच्छे रहेंगे, आपका एटीट्यूड अच्छा रहेगा, दैन मोर ऑफन दैन नॉट आपको मतलब ऊपर वाले से भी हेल्प मिलेगी। तो कोशिश यही है कि प्रोसेस अपना वो करूँ और जिधर भी जहाँ भी बारी हो, जो हो, उस कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट करूँ, एक अपने आप को ऑल राउंड प्लेयर बनाऊँ। पिजन होल नहीं करना चाहिए अपने आप को एज अ प्लेयर। आई थिंक सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होती है कि आप कभी कभार अपने आप को लिमिट कर देते हो। तो मेरा काम है जब तक खेल रहा हूँ एक्सप्लोर करता रहूँगा, सीखता रहूँगा और इंशाल्लाह जिधर भी मौका मिलेगा कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट दूँ। Really super. Enjoyed your innings and congratulations on the win. Player of the match, Shan Masood. And I would like to call upon the losing captain, Saud Shakil, to please join us. We'll have a quick word with him. Sindh lost this game by 5 wickets, so we'll just ask a few questions. Saud, I think score put up करने में चूक गए क्योंकि टॉस तो आपका था। हाँ, मेरा ख्याल में अर्ली ऑन उन्होंने अच्छे स्ट्राइक किए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पिच आज थोड़ा सा स्पंजी बाउंस था पिच में, ये कि उन्होंने उसको अच्छा यूटिलाइज़ किया और बीच में हमारी पार्टनरशिप लगी, हमने गलत टाइम से विकेट लूज़ की, तो उसके रिजल्ट में हम ज़्यादा अच्छा टोटल हम पुट आउट नहीं कर सके बोर्ड पे। इतनी क्रिकेट आपने खेली हुई है, आई एम श्योर आप इस ट्रेंड की वजह से नहीं जा रहे होंगे कि पहले बैटिंग करो तो मैच जीत सकते हैं। यहाँ पे चेस करके भी अवेलेबल है, तो टोटल अब डिसाइड करना ज़रा टफ है। आपने एक लो टोटल पहले मैच में डिफेंड किया, आज नहीं हो पाया। अगर आगे मौका मिलता है टॉस जीत के, आप इसी फैसले से जाएंगे पहले बैटिंग का? हाँ, वो तो डिपेंड करता है उसके उस दिन के मुताबिक, उस दिन की पिच के मुताबिक डिपेंड करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेंड के मुताबिक आप फॉलो करते हो, आप ऑन द डे डिसीजन लेते हो पिच को देख के। आपके हिसाब से इस वक्त बॉलिंग तो आपकी अच्छी परफॉर्म करी, डिफेंड कर चुकी है पहले भी, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको आप फाइन ट्यून करना चाहेंगे टीम में? देखें कि पर्सनली मैं भी देखूं तो मैं स्टार्ट लेके लंबा नहीं लेके जा पा रहा पूरी इनिंग्स को, तो यही है। और एंड में भी थोड़ी सी हमारी पावर रेटिंग उस तरह अच्छी जा नहीं रही, तो इन ये 2 शोबे हैं, इसको हम थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सऊद शकील, कैप्टन सिंध। मैं रिक्वेस्ट करूँगा यासिर शाह को, एंड ही इज़ द कैप्टन एंड ही इज गोना स्पीक टू अस। यासिर, छोटा टोटल सामने की टीम ने किया क्योंकि आप लोगों की बॉलिंग बड़ी शानदार रही। आपने ऐसा कहा था शान मसूद को आज पहली टीम बनना है चेस करने वाली? ये कि शुरू में सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि पहला मैच हम जीते हैं और चेज़ में जीते हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट का पहला ही मैच है। ये था कि हम कोशिश हमारी यही थी कि कम से कम स्कोर पे इनको आउट करें, और हमारे बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अच्छा, मतलब 2-3 ओवर हमारे ऐसे ख़राब गए, लेकिन फिर भी हमने 150 के अंदर अंदर उनको कर लिया।
तो आप लोग ड्रेसिंग रूम में होते हैं, अगर मैच हार जाता है आदमी, आज तो आज जीते हैं, थोड़ा सा प्रेशर ये भी होता है कि आपके पास माशाल्लाह काफ़ी नाम है, आप खुद हैं, शान मसूद हैं, हुसैन तलत हैं, हारिस सोहेल हैं, कि मैच जीतना चाहिए हमको? देखिए ज़रूरी है, हमारे अच्छी साइड है और हमारी बैटिंग साइड भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, तो हम कोशिश करेंगे हर मैच में, हमारी यही कोशिश होती है कि हम मैच जीतें और मैच जीतने के लिए खेलते हैं। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। यासिर शाह, कैप्टन बलोचिस्तान, और इसके साथ ही प्रेजेंटेशन का अख्ताम होता है। दे वन इट एंड देव गॉट द 2 points. That's the end of match 7. Balochistan wins, and that's how the standings end. Sindh on the top, Balochistan on number 3 with 2 points. They've got 4 points. They've won 2 matches. The action continues at Kingdom Valley National T20 Cup. It's the Punjabs who are going to fight each other. Central Punjab will take on ATF Southern Punjab, and we will join you for match 8, 1:40. ये जा वो जा, सीधी हाथों में गई। शकील खान पछता हुए, बहुत शानदार शॉट थी। Yeah, spin works, and there you go. It's down the boundary. अच्छा शॉट, दिलकश। कमिटमेंट लेवल शानदार है, और इसे उठाकर खेले, ये कमजोर शॉट है। Oh, what a catch! Oh, that's smart, really smart. Goes Goes aerial, and it's taken. शान मसूद ने 6 रन हासिल किए रिवर्स में।